welcome, sir, with round of applause. Our Dean Academics, sir, and Gautam, sir, is now coming. So before we begin this, I would like to give a brief intro of Vice Chancellor, sir. Why I'm saying brief intro? Because when I read sir's profile, I was like, oh my God, I can't complete it. So just to uh, uh, make me feel that how honored I am feeling right now to introduce our Vice Chancellor, sir, here on the dais. So, Professor A.W. Santosh Kumar, sir, Vice Chancellor, sir, MIT University, Mumbai, has a total of 33 years in academics and administrative experience. He has held the post of Vice Chancellor for a period of 4 years in one of the highly ranked universities. He had spearheaded many accreditations and academic committees at the national level. His administrative caliber include establishment of new institutions, center of excellences in the earlier places where he worked. He has brought in extramural funding to the tune of 1.80 crores. Earlier, he was working in the USA for a period of 16 years and has held various positions such as Dean, Academic Affairs, Dean, Accreditations, Co-Director, Center for Genomics, Director, STEM Program, and Professor of Microbiology and Infectious Disease. Sir has completed his PhD from the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and further completed his postdoc from University of California, USA, J. Craig Venters Institute, USA, National Institute of Health, USA. Sir is currently funded with 5 extramurally funded projects, 1 in NIH, USA, 3 DBT, GOL, 1 DST. Frankly speaking, I don't know anything about it, sir. I think we need to learn all these things from you. His major research focus includes study of human microbiome, role in systematic disease, funded by the National Institute of Health. His other areas of research is on post-pathogen interaction and drug discovery. Sir's performances indices are H-index 34, citation 4717. He has to his credit a total of 181 peer-reviewed research articles. Sir has published 4 books, 12 book chapters, and 18 patents. Sir has guided 15 doctoral candidates and currently guiding 5 candidates. His academic service includes sitting members in various extramural funding agencies nationally and internationally, namely NIH Study Section for Grant Review, member DBT, Technical Advisory Committee, member International Fellowship DST, member DBP, Project Review Panel member, Bill and Melinda Gates Foundation, Grant Review Panel member, BBSRC UK. Sir has also currently services in editorial board, editor of high impact peer reviewed journal such as Infection and Immunity, Journal of Bacteriology, PLOS1, Molecular Oral Microbiology, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers in Medicine, Frontiers in Public Health. I think this is not ending at all, but sir, with your request, we would like to give an end. And sir, thank you so much for gracing this occasion. I now would like to request our Honorable Vice Chancellor, sir, to open the workshop with his motivational words. Good morning, everyone. Respected dignitaries in the dais, Dean Academic Affairs, Dr. Srikanth Sarate, Dean Student Welfare, and Director of IVAS, Dr. Gautam Rawalji, the chief guest of the hour, Dr. Varun, Dr. David Rana, and our own Lakshmi, and all the faculty members of IVAS, my beloved students. See, the reason that we are here is to commemorate and celebrate the Day of Belongings. So this is being celebrated wide through all the campuses of Community in remembrance of our Chancellor and the President, who is none other than Dr. Mrs. Chavan. Mrs. Chavan is the younger brother of Dr. Asim Chavan, who is our Chancellor and President. It is on his birthday, May 7th, that we wanted to commemorate this Day of Belonging.
You might ask me one question, that why are we celebrating the Day of Belongingness? The Day of Belongingness is just to relate each and every one, taking a step ahead and step aside from all of the stresses that come across in our day-to-day life. We all know that stress plays a very vital role in each and every walk of life, no matter if it's going to be a student life or a faculty life or whatever it may be. And also, I should also say that natural calamities such as COVID and any other calamities also add up to the fuel. And that also creates a lot of preoccupation in each and everyone's lifestyle and also in life's modifications. So the day of belongingness, we just wanted to bring about a paradigm shift in addressing the students and everyone around on one uniqueness of drug abuse, substance abuse. Etc. And I should really thank Dr. Gautam Bawali for putting forth this unique event or workshop with three unique speakers, where one will talk about substance abuse and its physical concept in human being. The other one will also talk about the psychiatric, psychosocial implications of drug abuse. The third one, Dr. Lakshmi will talk about the revolutionists. So, perfectly being shined in such a way that this workshop is going to start with an alphabet A and it's going to complete with an alphabet C. And when we think about the substance abuse, see, during adolescent period, I should say that people who are 18 years and above, 1 in 4 are one way or other attached or afflicted with substance abuse, no matter what. It could be alcohol, it could be drugs, or whatever. And we all know that this is playing a very vital role in this adolescent period of time. And each and every institution is bringing about a very stringent rules and regulations, including Amity Human Right, where we are putting forth certain rules and regulations in bringing a discipline within our student community. But as when we talk about this drug addiction or addiction to alcohol or any other illicit substances, I should certainly say that who's to be blamed? When we think about the research says that there are three important factors that play a very vital role in substance abuse. This includes alcohol and any other thing. And these three different unique characteristics. Number one is psychosocial affliction, where approximately 12 of us we are with our family, and the next 12 of us we are here in the college premises. So there are two different environments, and the psychosocial element of your family origin, your interpersonal relationship with your friends, your peers, will also play a very vital role in bringing about the environmental changes that is needed for you for a good discipline future. A person who is going to have a good peer or a good friend will have good habits that come across in their life. At the same time, there is another important third paradigm which is playing a very vital role in everyone, which we call it as genetics. And we all know that we get our genes from our parents, and we have chromosomes in there, and chromosomes have genes in there. And research have identified a couple of unique chromosomes which play a very vital role in making one person addicted to substances and some other people very immune to substances. I would say that there is one chromosome named chromosome 8, and there are two unique points in that chromosome which decides a person to be protected against a substance or abusive against it. So having said these three important paradigm changes that come across in each and every one's life, it is our decision as students or as responsible citizens of India to make our future in a very good place, for which such workshops will certainly play a very vital.
So everyone is not the same, and every same has a middle class. But at the same time, we have to know that why we study this is just to propagate this message to all the students and to have them inside their mind so that we bring in a good Amity culture, which we respect the basic sanskars of Amity and also the student discipline that we are very strictly following in the recent days. So I really thank all the students who have come here. I know that these three important talks will be very unique in their own way. And bringing them together will be a very important issue where we can make them very positive and take home message is going to be very unique and that will perpetuate more well-being and the sense of well-beingness in each and every person, especially the student community. And I really thank Gavariki for making me inaugurate this workshop. And it's really a pleasure to see you all. That we all thank you. I think the applause should be little louder for sir. That's I ask. Yes. Sir, thank you so much for giving us three different paradigms about this issue. Because as a psychologist, sometimes we get stuck into psychology paradigm. And it's really good to listen to you always because what I feel, sir, personally as a faculty, that you have so much different views and different kind of depth in the concept. And it keep on adding in my knowledge. So thank you so much, sir, for such an insightful speech on drug and connecting it with genes. Thank you so much. Now, I would like to request our director, IBAS, as well as Dean of Student Welfare. Before that, I would like to introduce Sir. Sir has 32 years of experience in academia. Sir is PhD in psychology from Dr. Baba Saheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. Sir is PG Diploma in Education Guidance and Counseling from New Delhi. Sir was former psychologist, DGE, Ministry of Labour, Government of India. Sir was formerly Professor and Head Department of Applied Psychology and Counseling Center, University of Mumbai. Sir was also ex-honorable director, Indian Council of Social Science Research, Western Region. Okay, thank you so much, sir. Now I request you to say a few words about the workshop. Thank you, sir. Yeah. Honorable Vice Chancellor, sir, Dean Academics, Dr. Srikant Charate, sir, my colleague, Head, Dr. Bhavna, Dr. Manjari, our resource person, Dr. Varun, Dr. Lakwinder, Dr. Devendra Rana from Chandigarh, he has already joined, and we are conducting this workshop in hybrid mode. So we have resource persons joined from Chandigarh. I must thank our Honorable Vice Chancellor, sir, for giving us this opportunity to organize this workshop on very important topic, that is substance abuse, community awareness, and that too from the particular angle that is sense of belongingness, which he has already explained that concept, why we are celebrating this week as a week for fostering belonging. We all know because here we have student participants from various other schools. And we have tried our level best to make it interdisciplinary so that the concept of substance abuse can be understood properly. And that too in this context, which Honorable Vice Chancellor has very clearly mentioned,
that why we are celebrating this day of belongingness. It's a honor, it's a birthday wishes to our Dr. Atul Ji Chauhan. His birthday is being celebrated on 7th of May. And before that, we have started this whole week as a days for celebrating belongingness. Now, this whole concept, as our Vice Chancellor sir has very rightly pointed out, from both the perspective, from medical perspective and from social perspective, because as from psychological perspective, we believe that individual may have all kind of potentialities, personality, but that potentialities cannot be expressed if there is no supportive social environment. And that's why social, psychosocial perspective sounds very equally important. And in this context, as we all know, Maslow, one of well-known psychologists, is that if you want to realize, actualize, express yourself, we need to have a group with whom you can relate, to have that belongingness. And if you don't get such type of circumstances, psychosocial circumstances, you may not be able to actualize yourself. And that's why it requires this kind of setup, this kind of social context in which you'll be able to express yourself. Now, why we have linked this thing with substance abuse? Because we find that people, those who are victim of this substance abuse, they isolate themselves, they are detached from others, they kind of disconnect with family members. Okay, that become one of the most important cause for their addiction, substance abuse. And that's why to introduce, to foster this belongingness is important, because this is one of the most important intervention strategies to prevent such things from happening. Alcoholism, drug addiction, smoking. Now, these are some of the things which very sensible. One of our colleagues, she sent me a message 2 days back, and she said, "Sir, it is really very disturbing to see some of our students directly, indirectly involved in smoking, and sometimes even alcohol consumption." Okay, and the kind of disturbances she has expressed in her message, I replied, "Ma'am, we will sensitize our students. We will organize some preventive measures, because this particular workshop is for prevention. It is not remedy. We have full faith in your abilities and capacities that you are not going to be victim of this kind of problems in future too. And you are not allowing your students, your friends to become victim of this substance abuse." So with this as a IBAS director, on behalf of all my colleagues, my students, I welcome today's resource persons, Dr. Varun, Dr. Devendra, Dr. Lakhvinder, for accepting our invitation to be part of this workshop. And I'm sure that this workshop is going to be big success for all of us, because we'll be getting something which is very important for us to protect ourselves from such kind of negative happenings in our life, and protect our friends also from this, and establish that emotional ties with each one of us. We feel accepted, we feel attached with each other. So I'm sure that any kind of turbulence which we are likely to pass through, okay, we will definitely not resort to this kind of substance abuse. So thank you very much. Over to Dr. Lekha. Thank you so much, sir, from presenting a disconnecting view that when we go to substance abuse, it's kind of a disconnection from the reality.
But when we talk about the belongingness, a very good concept from coming from positive psychology, where we are connecting with our own inner self. So this is a journey from disconnection to connection. Thank you so much, sir, to give us opportunity to understand this journey. Now I request Professor Dr. Shrikant Charate, sir, who is Dean Academics, MIT University, Mumbai, and also Director IPSC, to say a few words about the program. Thank you, sir. Thank you, Dr. Rekha. Honorable Vice Chancellor, Dr. A.W. Santosh Kumar, sir. Dean Students Welfare and Director IBAS, Dr. Gautam Gowli. Dr. Bhavna Chananaji, Director of Fashion, School of Fashion Technology. Dr. Manjiri Vaidya, School of Languages. Dr. Lakwinder, Speaker. Other esteemed speakers, offline and online. And my dear friends. When Dr. Gautam Gowli asked me yesterday to speak few words on this particular occasion, first I would like to congratulate him for organizing such an informative seminar. We can call it as a workshop on birthday of our Honorable Chancellor of Amity University, Uttar Pradesh, and Additional President of RBF, on Dr. Atulji Chauhan, as a day of belongingness. I felt it very proud to be here because this is a serious topic which we need to understand. And today with three speakers which will be deliberating here, and the advice given by Honorable Vice Chancellor and Dr. Gautam Gowli on his welcome address. I hope all of your friends, all of you, need to listen each and every word today, because we were thinking 10 years before, what is substance abuse, what's going on, and it has come to our doorstep. Today it's almost to our doorstep, as mentioned by our Honorable Vice Chancellor, 4 amongst 1 is, on the contrary, going through this particular substance abuse and related things. And the most important, because experts are going to give so much advice today, each and every word I said, you need to remember. But the most important factor in your life when you become 18, that you are bound by all the laws, Indian penal codes in India. That is very much important. Right from your driving license and everything, you are adult. But at the same time, when you are away from home, you are residing over here or nearby, your friends are very much important. I see some of the chairs which are not occupied, and at some places I see a crowd. That means you believe on your friends. And remember, you can't choose the neighbors 100%, but you can choose your friends right from beginning. Those who will be with you all the time, in good times and bad times. You also can choose the workplace, but not all the colleagues, remember. So friends are playing most important role in your life. Either they can protect you or they can push you. So believe on your friends. And also, if you find that somebody is not going well along with you, you need to take some certain decisions. There will be stress being all the time you are in social media. There will be anxiety, but at the same time, look at few people, what they are doing to relieve the stress. Look at the example of Sachin Tendulkar. He used to listen, or he listens always music. And look at the stress he was having right from his age of 16 onwards till today, because he is Bharat Ratna. So I hope the deliberations of the speakers will exactly give an idea. And thank you very much. And as a Amity,
Honorable Vice Chancellor just said to me, advised to me that you people should be aware that we are taking so much care of you. And if anything happening, untoward incidents, there is always police patrolling going on around the campus, started days before, few days before, and it will be continued. That is for your safety, and you need to feel safe in the campus and outside too. And please report all your if anything goes wrong with you to the respective schools. Thank you very much. All the best to you for today's session. Thank you. Thank you so much, sir. After so much insightful words, I'm feeling really excited. But I need to tell you that as a psychologist, we believe in 5 senses knowledge, where multi-sensory approach we use. So that we have, sir, we have a Nukkad Natak today prepared specifically for this by Amicut. And also we have a dance program prepared by Amicut, specifically dedicated towards this program. So before we introduce that to all the audience and our dignitaries, I would like to request our Honorable Vice Chancellor to felicitate our speaker, Dr. Varun Manek. I request students to come with a, yes. Please, I need a round of applause from all of you, a bigger one. Very good. Dr. Varun Manek is MD Radiology from Government Dental College, Maharashtra. He was a gold medalist. I'll give a very deep, you can say, intro of sir later when sir's speech will start. Now I request our dignitaries to have seat and enjoy our multi-sensory approach based learning on drug de-addiction. Now I request a student volunteer to remove the sofa and Amicut team to come here and take position for the Nukkad Natak. Amicut team. Okay, paucity of time. I request Amicut team to please come fast. Sir, since they are coming, it's taking little time. I would like to inform you that we had this flash mob and Nukkad Natak and dance together in front of the atrium for all MIT University students. And we are planning to conduct it in the community itself in Bhatangaon as guided by Director Sir, so that we can spread this awareness. This Nukkad Natak is prepared in Hindi, sir, so that people can understand it. And the Nukkad Natak is specifically checked by Dr. Lakhminder also for the content, so that we can really spread awareness among the students. So we are soon ending the suspense.
धूम्रपान, शराब एवं ड्रग्स का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। इस नाटक के कोई भी किरदार इनके उपयोग को बढ़ावा नहीं देते। यह एक काल्पनिक कहानी है। किसी भी व्यक्ति एवं स्थिति से संबंध एक संयोग है। इस शहर को हुआ क्या है? कहीं रात है तो कहीं हुआ धुआं। नमस्कार, आदाब, स्वागत है इस नई कहानी के सफर में। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला और इधर चल गया। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं इन सब मोबाइल से ऊपर उठ चुका हूँ। ये तो गहरे नशे में है, इसे कोई नींबू पानी पिला दो। अरे पिलाओ मत, उसी में डुबा दो। ओए मोहम्मद मानो। हाडूबे नशे में यहाँ है, हाथों में बॉटल है, लंग्स में धुआं। उफ, ये गहराइयाँ। हाय, नशे कब से करने लगा तू? मैंने ना पहली बार पी थी जब पापा के साथ झगड़ा हुआ था। दूसरी बार पी थी जब मम्मी की तबीयत खराब थी, और तीसरी बार तक मैं एडिक्ट बन चुका था। तो मार तू भी 2 दम और भुला दे अपने सारे गम। दम मारो दम। लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम भी कहो ये कोई बात है। अरे पर ये बात है क्या? अरे वही जिससे रात दिन और दिन रात लगने लगती है, जिससे दुनिया जादुई और सपने असली लगने लगते हैं। पेश है जादू की गोली, बस एक गोली लो और खो जाओ सपनों की दुनिया में। जादू गोली लो, टेंशन दूर करो। अरे हमें भी दो, हमें भी दो। हाँ हमें भी चाहिए। अरे यार, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे मेरे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। माँ बाप का पहले कितना प्रेशर है कि अच्छी नौकरी ढूंढो। इतना स्ट्रेसफुल है ये सब, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये ट्राई करके देखती हूँ, उस दिन भागना नहीं दिया। हुआ मध्यम, धुआं उठने लगा, भीड़ सुट्टा सब यूं ही बिकने लगा। मैं नशे में रहा, कमी चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हाँ ये मेरा पहली बार है नशा। हाँ ये मेरा पहली बार है। अगर ड्रग्स लेने से स्ट्रेस इतना कम होता है तो मुझे और ड्रग्स चाहिए। मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। सर की बत्ती की हो जाए तो ड्रग्स दो। अरे बेचैन दिल डिप्रेस हो जाए तो ड्रग्स दो। बेखबर बेअसर
आगे ड्रग्स ही क्यों? ये सब नशा करने के अंजाम जानते भी हो? 2019 में देश भर में हुई 1.3 लाख आत्महत्याओं में से 5.6% आत्महत्याओं का कारण नशीले पदार्थ एवं शराब का दुरुपयोग रहा। 10 में से 7 युवा अल्पसुदार हैं और इसी कारण ड्रग्स लेने का फैसला करें। अंततः ओवरडोज के कारण घातक परिणाम भुगतते हैं। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधों में तनाव आए, घरेलू हिंसा, धमकी और यहाँ तक लोगों की हत्या भी होती है। परिवार कर्ज और गरीबी के शिकार बन जाते हैं और नशे में डूबने की लत में हम अपने आप को भी डुबा रहे हैं। दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। एडिक्शन एक काली रात है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। अपने आसपास और अपने अंदर झांक के देखिए। यदि आप या आपके किसी अपने को लत लग रही है, तो तुरंत मदद लीजिए। आप किसी भी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या डी एडिक्शन हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। हो गए परेशान तो ड्रग्स ले लिए, लेने के बाद अब हम रो लिए, उड़ने के बाद नीचे तू कब कैसे गिरा, बस उड़ता धुआं, उड़ता धुआं, बीड़ी और सुट्टा ना लीजिए, लेना है तो अब खांसी के लिए, ये देसी जिंदगी बेचैन क्यों करना, बस उड़ता धुआं, उड़ता धुआं, उड़ता धुआं, उड़ता धुआं। We hope you enjoyed this performance from Amity Uncut. Thank you all for your motivation. I would especially thank IMAS ICAC, Dr. Gautam Gavi, and the esteemed judges for encouraging us to put this performance on drug de-addiction. Thank you all so much, and a special thanks to our president, Mansi Tikopekar, who is not here, but this wouldn't have been possible without her.
I think after this, our all senses are awake. Yes or no? This yes? Say yes. Yes. So your sense of hearing, your sense of understanding, which is important in the psychology side, all are awake, and we know what is happening here, and we know how we are supposed to become an instrument for this particular message, right? So taking it ahead, now we are starting with the workshop today. So now, okay. So I would like to invite our first speaker of the day, Dr. Devendra Kumar, who is an assistant professor in drug de-addiction and treatment center under the Department of Psychiatry, PGIMER, Chandigarh, one of the very renowned institute of Punjab. Sir has done his MPhil in clinical psychology from NIMHANS, Bangalore, and completed his PhD from PGIMER, Chandigarh. With a total of 20 years of clinical teaching and research experience, Dr. Kumar has published 28 research papers in different national and international journals, and also presented his work in national and international conferences. Sir is also actively doing research and conducting workshops related to different areas in psychiatry. Dr. Kumar is also a member of APA, American Psychological Association, and fellow Indian Association of Child and Adolescent Psychiatry and Indian Association of Social Psychiatry. Sir, thank you very much. With your permission, I would now like to open the house for sir. Sorry, I would like to request sir to please start his topic. Good morning, everyone. I think I'm audible. Rekha ma'am, am I audible? Yes, sir. First of all, I would like to thank the dignitaries seated on the dais. Professor A.W. Santosh Kumar, Honorable Vice Chancellor, AUM. Dr. Gautam Gowli, Dean Student Welfare, Professor and Director, AUM. Dr. Srikanth, Dean Academics, Director and Coordinator. Dr. Lakshminder, Dr. Rekha. Today I will be talking about basic things which are there in substance abuse. So telling about an overview, what are the drugs, what are the etiological factors. Okay. Oh. I'm starting my presentation. First of all, I would like to tell about different terms. What are the terms which are used in drug addiction? First is acute intoxication. This is basically temporary condition which is followed by intake of alcohol or other psychoactive substance. And this intake results in disturbances of consciousness,
cognition, that is intelligence and memory. क्या हो गया? Okay, अब हो रहा है? Hello. Sir, please reshare your screen, sir. Just a minute. Sir, now please click on Now, screen is share. it visible now? Yes, sir, it's visible but not in full screen, sir. Just a minute. No, sir, it's not full screen, sir. Just a minute. Sir, now click on screen button, sir. Don't share your PPT, sir. Now, is it visible now? No, sir. Sir, when you click on share screen button, after click on screen button, sir, and then share your screen. Please, sir, don't share your PPT. Just a minute. Sir, click on Share, yes, sir. I Share. can't Click on share screen button and share, click on yeah. screen button, sir. Left on top corner, left on top. This. Screen button. Yes, sir. Please share your screen, sir. Now, is it visible? Yes, yes. Now we can Okay, see, sir. right, Click on, right. sir. Now click on PPT, sir. Click on PPT. Yes, sir. Sir, there is a click. Now, is it okay? No, yes, sir. Now it's okay. Yes. Okay, right. So, I was talking about different terms which are used in drug abuse. First was acute intoxication. This is the condition which is followed by intake of alcohol or other psychoactive substance. And this intake results in disturbance of consciousness, cognitions. Cognition means disturbance in intelligence and memory, disturbance in perception, that is delusion and hallucinations, affect and behavior, and certain other psychophysiological functional responses. Those may be blood pressure, skin conductance, heart rate, etc. So in this condition, there are multiple disturbances, which I highlighted just now. Then second term is harmful use. There are two kinds of harms to physical health of the person and harms to mental health of the person. In physical health, like people may get hepatitis that is due to injected drug, and they may get mental illness like depression, which is secondary to consumption of alcohol, or schizophrenia, which usually occurs after consumption of cannabis. Then third term is drug abuse. This is usually maladaptive and consistent use of a drug despite social, occupational, psychological, and physical problems which are enhanced by the drugs. So there are dysfunctions in the area of social functioning, occupational functioning, and psychological functioning. Still, the person continues taking the drugs. It is also recurrent use in situations that are physically dangerous, such as driving while intoxicated. So basically involving in activities where activities continuation may be dangerous for the person which is carrying out the activities. Then substance abuse. This is again maladaptive. This is again maladaptive pattern of substance use leading to clinically significant impairment or distress, manifested by one or more of the following. That is failure to fulfill major role obligation at work, school, or home. The recurrent substance use in dangerous situation and recurrent substance related legal problems. So here what the people is not able to do is not able to perform duties at workplace, school and home, and definitely having certain legal problems.
then who are the person whom we can say that they are dependent on drugs? First of all, they should have strong desire to take the substance and difficulty in controlling substance taking behavior in terms of onset, termination, and level of use. Onset means they don't know when to start. Termination, they don't know at what level of drinking they should stop drinking, and they don't know whether they should stop after 220 ml, 500 ml, or 1000 ml. So disturbance in onset, termination, and level of use. Then third criteria is physiological withdrawal state. Any substance is stopped, then after usually 48 hours there are withdrawal symptoms. In case of alcohol, it might be confusion, memory loss, tremor, shaking. Then in severe cases, there may be seizures. Then evidence of tolerance. Tolerance means if I'm starting taking alcohol, I'm getting a great hike after taking 100 ml of alcohol. And after 3 months, I'm not getting that particular hike, which I used to get 3 months back. So this time I need 500 ml of alcohol to get that hike, which I was getting earlier. So I'm developing tolerance. Then there is progressive neglect of alternative pleasure or interest, not able to exercise properly, not able to go to movies, not able to involve in any activities. So no more pleasure is there. Then persisting with substance use despite clear evidence of outwardly harmful consequences, like meeting with an accident, involving in legal problems. So out of these 6 criteria, if somebody is meeting 3 criteria within last 6 months, then we can say he or she is dependent on drug. He is taking substance in dependent pattern. Then we have next term like substance withdrawal. This is substance specific syndrome, and which occurs after cessation of or reduction in the intake of a substance. And suppose somebody is taking smack, he will stop taking smack, then within 24, 48 hours, there would be withdrawal symptoms of smack, because there is some level of smack within the body. So that will demand that particular level in the body and will produce withdrawal symptoms. These may be like running eyes, sneezing, aches and pain, body aches. So these are substance specific syndromes, and which make clinically significant distress or impairment in the patient. Then there are certain classes of psychoactive substance. First and foremost is alcohol. This is found in liquor, beer, and wine. This liquor usually contains 42.8 volume per volume. Beer usually not more than 8%, and wine usually not more than 15% of the total substance. Then second is nicotine. This nicotine is found in cigarette, cigar, BDs, and smokeless tobacco. And there are different forms that may be smoked, chewed, or that may be inhaled in different forms. Then next is cannabis. This cannabis is known by different names like blunt, dope, ganja, grass, herb, joint, bud, meridian, pot, reefer, green, trees, smoke, sensimilla, skunk weed, and so forth. So these are different names all over the world. Some names are very famous, like in Mumbai, like joint or skunk. It is either smoked or chewed or swallowed. And these are different preparation of cannabis, from raw to laboratory product. Then we have opiate. In this particular category, we have diacetylmorphine, and among that we have smack, heroin, horse, brown sugar, dope, H, junk, skag, skunk, white horse, China white,
and cheese, and also certain medicines which are usually antihistamine in nature. And either this is snorted or maybe taken in different forms, which is shown in the picture, right and left both. Then we have stimulants. In stimulants, we have cocaine. This is also known by different names like blow, bump, C candy, Charlie, coke, crack, flake rock, and so and toot. Then amphetamines, they are also called black beauties, crosses, hearts, elect turn around, and speed because they make our thought to race like anything. So they are also known as speed. Then methamphetamine. Again, this has different category like meth, ice, crank, chalk, crystal, fire glass, go fast and speed. This is also stimulants and thoughts goes like racing thought within the mind. Then next is cocaine, and you can definitely see pictures of cocaine which are there in the figure. And cocaine is snorted, smoked, or injected. Then we have inhalants. First is solvent, like we have nail paint thinner, gasoline, and glues. Then we have gases, different kind of gases like butane, propane, aerosol, propellants, nitrous oxide. Then we have nitrites, isoamyl, isobutyl, cyclohexene. So these are three categories which is there in inhalants, solvent, gases, and nitrites. And usually what the people do, they usually put these on a cloth, then smell it like this. Then we also have laughing gas, poppers, snappers, and whippers in this category. Then what could be the different causes of substance abuse? There is no single cause. Causes are multiple. And causes may be biological, psychological, social, and there is contribution of all these three factors in continuation and initiation of substance abuse. If you talk about genetic factors, then definitely there is genetic loading. If both parents are alcoholic, then definitely there are higher chances of their son or daughter getting substance abuse disorders. If one parent is alcoholic, then also there are higher chances in comparison to normal population. We are able to identify certain gene, but not with confidence that this is the particular gene which is responsible for substance intake behavior. Then we have specific family factors like ineffective parental family management techniques, like there is no discipline within the family or inconsistent discipline within the family. Sometimes they won't look at the child for 3 months, then suddenly they will come and they will beat the child. And there is negative communication pattern within the family. Usually they blame the child, they criticize the child, and there is no appraisal or praise for the child. Then poor family relationship, like there is low bonding to the family, there is lack of affection, poor communication with the child, and also there may be history of child abuse. Next, sometimes single parent household is also one of the causes of substance abuse in later life. The next is parental role modeling. That is, if parents are criminal or they are antisocial, then there are chances that there would be higher chances of drug abuse among their children. If parents use drugs, if there is perceived drug use within the family, like that is gradually taken, they are taking substance in front of their children. So that is also cause of observation learning. Then if they have positive attitude toward drugs by parents, like in Punjab, alcohol is usual, and people usually take drugs in front of their parents. Then parental modeling of drug use as a coping strategy. Then this is the most important factor, peer pressure. Teenagers tend to give into peer pressure
due to what? They feel that they will be rejected within the group. So don't feel pressure, don't feel that you will be rejected if you don't drink or you don't take drugs. And they have strong feeling to be liked by others. So taking drugs won't enhance your liking among your group. There is fear of losing friends. If they will not drink, then they will lose their friends. This is the feeling. Then there is desire to appear grown up, and desire of not hurting feeling of others, and certainly inability to deal with situations also is a contributory factors in peer pressure. And sometimes they are ambivalent about their likings. They are not sure what is right and what is wrong and what exactly they want there in life. So they are carried out by the peer pressure, and that is carrying them towards drug use or substance use. So what my suggestions are, you need not to carry out with your peers, and please don't just reject them, just don't accept their offer, and just be strong. The next factor is mental health of the individual. There are certain factors within the individual, like if somebody is in distress, they have low self-esteem, if they are facing depression. So all these factors contribute to the initiation and maintenance of drug abuse. And drug use can induce psychiatric pathology, and each exacerbates other in additive manner. Then we have certain social factors. There may be low socioeconomic status, unemployment and poverty is also another factor which may force one for drug abuse. If somebody is homeless, there are certain educational pressures in institutions there they need to perform, so they give up under those pressures and leads toward drugs. Then there are fast growing social, economical and technological changes where they are not able to adapt to these changes, and that is forcing them to take the substance. Then there are certain personality factors, and these works as predisposing, redirecting or maintaining substance use. If a person has anxiety, depression, impulsivity, sensation seeking or arousal, then definitely there are chances that he or she will goes taking drugs, or there are likely high chances of getting into involvement with substance abuse. And it is also found that certain personality disorder like paranoid personality disorder, schizotypal personality disorder, histrionic, antisocial, borderline, passive aggressive. So these group of personality disorder also maintain drug addiction behavior in the patients. There may be other etiological factors like presence of stressful situations and poor ability to cope with stress. And also they have poor knowledge of substance, what havoc they are going to do within the body. So they are not aware of that. And usually they don't feel that they are responsible for drug abuse, rather they blame other people for their drug intake behavior. And usually they have poor social support. Then how to identify signs of drug addiction and drug abuse among student or normal population? We need not to ignore these signs because these are important. And we need not to be fooled. As painful as it may be, detecting the signs of drug abuse, learning about the different types of drugs and getting help can possibly save someone's life. So just look at your neighbor, look at your like in first category, how to recognize opiates. So what are the signs? If you find small empty baggies with any residue in them, that may suggest the use of heroin. Like you can see in picture, there are small pockets. If you find these pockets empty, but there are something white remains
in these pockets that may be suggestive that persons are taking heroin. Then if you find discarded syringes around the house, if you find spoons hidden with burn marks on the bottom, like in this picture, with the residue in them, which definitely indicate drug abuse. If you find spoons that look like they have been used to crush pills or bent spoons, so these are basic signs that somebody is there who is taking drugs. Then what could be physical appearance of the person? First, they have constricted pupil, which will appear like pinpoint or small dot, like in this picture. You can clearly see this pupil is below 2.9 mm in size. So if you see that pupil are pinpoint, then you can guess that they are taking opiates in the form of smack or heroin. Some people may get very hyper, active or frantic and run around working or looking busy, while others get very lethargic. And sometimes we can find needle marks on their arms, behind the knees or ankles. And suddenly, without any particular reason, they have cold symptoms. They have cramps, they might have diarrhea, upset stomach, and within few minutes or next day, they will be perfectly all right without any particular reason. And they go around asking other for money. And sometimes they feel extremely thirsty without any particular reason. And these are the hand of a person who was taking injected drugs, and these are marks, needle marks on the hands. So you can always look needle marks on hand or calf muscles or ankles. And what could be mannerism or behavior of drug addict in case of opiate? He may feel erratic, restless, and sometimes feel anxious and irritable. They may have trouble sitting or relaxing, usually feel nervous and aggressive. They itch and scratch, often picking at parts of their arms, legs. हाँ जी, स्लो करो तेज करो. So usually they don't sleep. If they sleep, it is a bit difficult for them to get up. They sleep for 15-20 hours. And they tend to move fast, often repeating the same action for hours, like cleaning and fixing something. They may have no appetite or interest in food, and they usually ramble in their conversation, jumping from one subject to the next, and constantly sniffing despite lack of cold or allergy. And they usually constantly licking their lips and feel extremely thirsty. And they may sweat profusely. So these are basic symptoms from where we can guess that people are taking opiates. And what could be the sign of cocaine and use and addiction? This cocaine addiction can occur very quickly and be very difficult to break. Usually they have glassy eyes. Eye looks like crystal glass. They have very large pupil in comparison to what opiate people had, small pupil. And their nose is raw and red. And usually there are needle marks on arms, behind knees and ankles. And they usually have long sleeve shirt, even in hot weather, to cover their arms, just to hide their hidden needle marks. And there are scab on arms, face, legs from picking. And their teeth are usually weak and broken. And they usually found weak, and there is history of weight loss. And these are the pictures. They no longer remains you, like the lady
who is very beautiful. This man with curly hairs, what he has become. Then we have marijuana. People who use marijuana, they are usually feeling irritated. Their face is totally red and their eyes are also red. They feel dazed or expressionless. Their lips are usually dry and that is called cotton mouth. They have strong odor of burnt rope or grass on person or their clothes. So usually they walk around in dazed or euphoric stupor, and there is lack of emotions, and they are gone by whatever attitude. They usually stare out into space or at nothing without any particular reason, and may go into fit of laughter or laugh when there is nothing to laugh about. And they usually put clothes in wash immediately upon coming home, taking a quick shower before being around others. And suddenly they feel very hungry, and that is called munchies. So what are the effect of alcohol? In low doses, what alcohol does? It has relaxing effect, reduce tension, lowers down inhibition, impair concentration, slow down reflexes. Then in middle doses, their speech might be slurred, they feel drowsy, then their emotions are altered. In high doses, like they may feel vomiting, there's difficulty in breathing. Hello. ਹਾਂਜੀ. So they feel maybe coma or death due to excessive quantity of use. Then this alcohol definitely damages frontal lobe of the brain, and there is overall reduction in brain size, leads to alcoholism, and definitely there are certain disorders like vitamin deficiency where memory disturbances are there in people who are using alcohol in a larger quantity. Then this is the picture of liver cirrhosis. Upper in picture you see healthy liver, and below you see a liver of a patient who was having cirrhosis. So this is very critical condition, and death is definitely certain in this condition. Then fetal alcohol syndrome. This condition acquired by the unborn fetus and caused by the mother drinking alcohol during pregnancy. This alcohol passes through the placenta to the unborn child, and a single drinking beans by pregnant woman can be enough to permanently damage the brain of her unborn child. And this is the major reason the child may be mentally retarded. Then there are certain treatment approaches like detoxification. In detoxification, we usually take out drugs from the blood. We give them anti-craving drugs, also certain drugs which are aversive in nature. Then we have psychological approaches like behavior therapy. In that we have ourselves training, code sensitization. We have different social groups like Alcoholic Anonymous and Narcotic Anonymous. Then we have different coping skill approaches and relapse prevention approaches which are useful in treating drug addict patients. Then in coping skills, we teach them drink refusal skills. Like we teach them, you have to assert that you have given up drinking, and you need not to feel ashamed that you have given up drinking, and you have to prepare for reaction from friends. They may make fun of you, may make faces at you, and let everyone know that you have given up. Do not try to give logical explanation to rationalize your giving up of drinking. And you need to avoid situation where you may get pressure from superiors. When you meet new friends, do not tell them that you have given up. Tell them you do not drink. And firmly tell that you have given up, and no need to bend up to their request, and be away from them.
Then we teach them different problem solving strategies via cognitive and behavioral coping strategies. Then we teach them drink refusal skills, how to say no to request, and also tell them or teach them assertiveness training. Then also we plan for emergencies and how to cope with relapse. Like we teach them how to be assertive, how to receive criticism, how to manage anger, how to manage their negative thinking, how to manage their negative mood and depression, and also we support them to enhance social support network. And there are certain myth and truth, like it's just a beer, it can't permanently damage you. The truth is, it can damage your heart, liver, brain, and takes away years of life from your life. Then marijuana doesn't stay in your system for long. It can be detected in your urine for 14 days after use. Then alcohol gives you energy. No, it is a depressant. It slows your ability to think, speak, or move. Then cocaine is not addictive unless you use it frequently. Even a single use of cocaine can be fatal, so just avoid it, be away from it. Drugs are a bigger problem than alcohol. No, alcohol and tobacco kill more than 50 times the people killed by cocaine and other drugs. A drink or two will not interfere in driving. No, even small amount of alcohol can impair your judgment and coordination. So there are chances in injectable drugs, there are chances of getting HIV and hepatitis C. So just be away from them. So a healthy lifestyle, including healthy eating, exercise, and sleep habits, these are very good abstaining factors. Just stick to it. And humor is one of the greatest and quickest devices for reducing stress and thereby moving towards excellence. Treat your physical body as your temple. Your body is the only vehicle you have been given for this ride called life. So this is your body, your temple. If you spoil your temple, then definitely your religion will be spoiled. So save your body, make your body healthy, avoid drugs, avoid alcohol, avoid everything which is addictive in nature. Thank you. Thanks, sir. Thank you so much, sir, for such an insightful lecture. And sir has covered so many different aspects, which is not possible to cover or explain in any classroom. So thank you so much, sir, since you are from psychiatry working in the field itself. So sometimes if we try to understand about addiction, about different things, it become a real life for us. But when some expert come from the real life, and when they explain that with such a composed the way sir has explained it peacefully, it's not easy for me to teach like that. So it is very clear that since sir is coming from that field, that how sincerely sir was telling us to understand about it. It was and I was feeling the same, that how important it is to understand different things and different dimensions of the drug and different drugs which we generally consume, and we have lots of myths about it, that yes, it's okay, we can drink beer, that's okay, and sometimes we end up telling our friends. So there are so many messages sir has given. Sir, thank you so much. Now I would like to invite our speaker of the day, Dr. Varun Manek sir. Sir has studied MBS Oral Medicine and Radiology from Government Dental College Hospital, Mumbai. Sir is currently working as maxillofacial radiologist at Aditi Diagnostic, Matunga, and at CBCT Imaging Center, Malad. Sir is also an ex-assistant professor, Government Dental College, Mumbai, which is one of the biggest dental college of Mumbai, Maharashtra, I would say. Sir has treated more than 1,000 patients with oral precancerous lesions developed due to addiction of chewing and smoking tobacco, with counseling and RT therapies, cancer-preventing drugs, and surgical excisions.
Dr. Varun has conducted multiple de-addiction workshops and camps at several schools and colleges across Mumbai and Thane. Sir is also volunteer of Gayatri Parivar and Diya. I am one of the student of Sir who has attended many workshops of Sir. I am so impressed the way Sir teaches, explain things to different age group. So I welcome Sir on the dais and I request Sir to present and share his expertise with us. Right. Yes, yes. Good afternoon, students. Before I think 10 years, we were attending a head and neck cancer conference at Ahmedabad. A very renowned onco-surgeon, Jatin Shah, what he told us before starting his lecture was third in the series. So it was after 1.5 hours of starting the session. So he told, अब मैं जो भी बोलूँगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा because after 50 minutes to 1 hour, the receptivity of brain goes down tremendously. So he started with telling that अब मैं जो भी बोलूँगा मैं तो बोलता जाऊँगा फर्क नहीं पड़ेगा because आपकी receptivity बहुत कम हो गई है. So you all are students, right? So I will give you one guidance law of memory is there. In first year of MBBS, BBS, we used to study book of physiology and guidance. So this will be very useful for you as a kid for getting good marks in the exams. You means you given the rule of 50-10, 50-10. So हम क्या करते हैं जनरली एग्जाम के टाइम 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं ना रेगुलर डेज में तो बुक से एलर्जी रहती है राइट सो ड्यूरिंग एग्जाम्स हम टीएल्स में the prepared prelims will be about 6 hours, 8 hours, 10 hours, study like that, right? Agree? Yes. So I will give you the tip how to study. So कैसा करना चाहिए स्टूडेंट्स को जनरली हम क्या करते हैं एक साथ 3 घंटा पढ़ते हैं एक साथ 4 घंटा पढ़ते हैं है ना कभी हम सुबह पढ़ते हैं कभी हम रात को पढ़ते हैं कभी दोपहर को पढ़ते हैं राइट सो ये गिवन अ टिप फर्स्ट थिंग आप जहां पढ़ते हैं पढ़ने की जगह फिक्स होनी चाहिए पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक लास्ट स्टूडेंट्स को स्टडी थी बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी इज मॉर्निंग सेकंड बेस्ट टाइम इज इवनिंग थर्ड बेस्ट टाइम इज नाइट एंड फोर्थ बेस्ट टाइम इज आफ्टरनून बिकॉज़ आफ्टरनून में आप थके हुए रहते हैं खूब जाता है तो इंटेस्टाइन के बाद ज्यादा होता है ब्रेन में कम जाता है तो लेथार्जिक हो जाते हैं राइट सो फिक्स योर टाइम टू स्टडी फिक्स योर पेस टू स्टडी एंड थर्ड रूल इज 50-10 जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तो एक फिक्स टेबल चेयर पे बैठना है 50 मिनट्स पढ़ना है 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है एंड वो ब्रेक ना साइंटिफिक ब्रेक होना चाहिए आप वो ब्रेक में अपना मोबाइल देखने लगे यू कॉल योर फ्रेंड यू वॉच न्यूज़ यू वॉच वेब सीरीज ऐसा नहीं और 10 मिनट्स आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए तो कैसे रिलैक्स करेंगे आप पढ़ के बैठ के उठे हैं तो थोड़ा बॉडी में स्ट्रेन रहेगा तो 4-5 राउंड्स लगाइए तो मसल स्ट्रेन चला जाएगा हाफ ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक करेंगे तो क्या होगा बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ेगा ब्रेन का ब्लड फ्लो जाएगा एंड थर्ड थिंग 5 to 6 डीप ब्रेथ्स लें तो ब्रेन का ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगा तो पढ़ने के लिए फिर से रिफ्रेश हो जाएगा आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी तो 3 रूल्स ऑफ मेमोरी फिक्स प्लेस ऑफ स्टडी फिक्स टाइम ऑफ स्टडी एंड 50-10 50 मिनट्स पढ़ाई करें 10 मिनट ब्रेक लें एंड सपोज आपका पढ़ने का टाइम सुबह 8 से 12 है 8 to 12 है तो 8 to 8 पढ़ें 10 मिनट ब्रेक लें 9 to 9 पढ़ें 10 मिनट्स का ब्रेक लें बट वो 10 मिनट्स में फ्रेंड से बात नहीं करनी है वीडियोस नहीं देखनी है न्यूज़ नहीं देखनी है आपकी ब्रेन के रिफ्रेशमेंट के लिए ये आपके रिजल्ट्स को बहुत ही बेटर कर देगा आपकी मेमोरी आपके कंसंट्रेशन को ट्राई देता है ओके ओके सो आई स्टार्ट माय लेक्चर विद डी एडिशन सी देयर आर टू हैंड्स एक हैंड है वो डूबता हुआ हाथ है वो पेशेंट का हाथ है और ऊपर जो वाला हाथ है वो आपका डॉक्टर का साइकोलॉजिस्ट का सोसाइटी का हाथ है क्यों क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस इस स्लाइड का ये है कि अगर पेशेंट नहीं छोड़ना चाहेगा ना उसको कोई नहीं बचा सकता यानी पहले पेशेंट रेडी होना चाहिए हाँ कि मुझे छोड़ना है then only doctor psychologist and society family can help if patient is not ready no then no one can help and मेरे पिछले I completed my MBS in 2014 so 2011 से लेके अब तक का मेरा experience है psychologist has got a better role than a doctor in addition to that psychologist saying you are more important than me in carrying out the addiction this is my experience and this is the general experience of the doctors because doctors क्या है
ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बता देते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर बार-बार काउंसलिंग करना पड़ता है, बार-बार पेशेंट को मोटिवेट करना पड़ता है। तो क्लिनिकल सेटअप्स में इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने 5 साल काम किया, टाइम ही नहीं रहता है। सो साइकोलॉजिस्ट हैज गॉट अ मोर इम्पोर्टेंट रोल देन अ डॉक्टर इन द एडिक्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये व्यसन आप हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी में क्या बोलते हैं? व्यसन बोलते हैं, राइट? व्यसन इज वर्ड कहाँ से आया? इट हैज कम फ्रॉम व्यसन। व्यसन का मतलब क्या होता है? तो जानवरों को रस्सी बांधते हैं, जिससे जानवरों को कंट्रोल करते हैं, तो व्यसन कहते हैं। तो व्यसन क्या करता है? एडिक्शन क्या करता है? वो जैसे जानवर को रस्सी कंट्रोल करती है, वैसे एडिक्शन हमको कंट्रोल करने लगता है। इसलिए यहाँ से ये वर्ड आया है। नेक्स्ट प्लीज। Okay, this is a philosophical definition. What is philosophical definition of addiction? Addiction is looking right things at wrong place. What we are doing? यानी कोई आदमी एडिक्शन क्यों करता है? वो पीस पाना चाहता है, हैप्पीनेस पाना चाहता है, ट्रैंक्विलिटी पाना चाहता है ना, बट वो गलत जगह ढूंढ रहा है ना? He is finding out that thing in wrong place. So addiction is nothing but looking right thing, peace, happiness, calmness at wrong place. Next. Okay. So ये हम सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, right? We are addicted to mobile. In spiritual science we are told that आप उपवास करो, एडिक्शन का फूड एडिक्शन है कंट्रोल करने के लिए। मैं स्टूडेंट्स को एक है चैलेंज देना चाहता हूँ। एक दिन आप अपना मोबाइल का डिटॉक्स एडिक्शन कर सकते हैं। एक दिन आप मोबाइल यूज नहीं करो, आप रेस्टलेस हो जाएंगे। आप व्हाट्सएप 2 घंटा नहीं देखते तो रेस्टलेस हो जाते हैं। यानी कभी आपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप भेजा और उसने डबल ब्लू टिक आ गया और उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो ऐसा लगता है तो उसका फोन में से बाहर निकले तो उसका गला पकड़ के बोलूं क्यों रिप्लाई नहीं दिया तुमने? होता है ना ऐसा? फेसबुक पे पोस्ट डाला तो कितने लोगों ने लाइक किया, बार-बार देखने का मन करता है। So this is our addiction. We are really addicted to our mobiles, especially from last 2 to 3 years. जब हमारी हर पढ़ाई, हर वर्क हमारा मोबाइल, लैपटॉप से थ्रू होता है। We are really addicted to this thing, technology. We should try to de-addict ourselves. Students एक दिन, not in a week, but once in a month आप 4 घंटे करके देखिए, 4 घंटे अपना व्हाट्सएप चालू रखिए एंड 2 मंथ के बाद आपको रियली लगेगा कि कितना पीसफुल फील कर रहा हूँ, कितना हैप्पी फील कर रहा हूँ। जितना मैं व्हाट्सएप यूज करके, फेसबुक यूज करके जितना मुझे एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है, उससे ज्यादा मुझे छोड़ के मिल रहा है। नेक्स्ट। ओके, गॉसिपिंग, ये टीचर ने ये किया, आज इसने ये किया। ये गॉसिपिंग इज आल्सो टाइप ऑफ एडिक्शन। यानी कबीर ने बहुत अच्छा वो लिखा था, निंदा इज विटामिन एन। मेडिकल साइंस में इसको ऐसा मिस्ट्री में बोलते थे, विटामिन एन दूसरे की चुगली करने में, निंदा करने में बहुत हैप्पीनेस फील होती है। सो वी शुड अवॉइड, दिस इज अ टाइप ऑफ एडिक्शन। कुछ लोग बोलते ही जाते हैं, जैसे आई एम आल्सो हैविंग हैबिट ऑफ टॉकिंग बिकॉज़ मुझे लेक्चर देने का मौका मिल गया, मुझे हां और 10 मिनट मिल जाए और 10 मिनट मिल जाए, राइट? सो दिस इज आल्सो टाइप ऑफ एडिक्शन। नेक्स्ट फूड एडिक्शन, ये तो बहुत कॉमन है ना? नेक्स्ट शॉपिंग। ये मैंने अपनी वाइफ, मेरी वाइफ भी शी इज आल्सो डॉक्टर, तो उसको देख के मैंने स्लाइड है। जब मैं कोई हमारे वहां थाने में बहुत फेमस शॉप है, जब वहां से गुजरते हैं ना, वी पास थ्रू दैट प्लेस, नो लास्ट मंथ उसने ड्रेस खरीदा हो, साड़ी खरीदी हो, बट उस शॉप से गुजरेगा तो डेफिनेटली गो इनसाइड दैट शॉप एंड बाय, बिकॉज़ वो ट्रिगर जोन है उसके लिए, एडिक्शन का ट्रिगर जोन है। कहां यहां से गुजरे तो वो साड़ी खरीदनी है। नेक्स्ट। ओके, so my primary concern, and आप इंडिया में प्रैक्टिस करेंगे ना, साउथ एशिया में सबसे प्राइमरी कंसर्न यही रहेगा। तो देखो स्मोकलेस या स्मोकिंग, इंडिया का डेटा मैं आपको बताता हूँ, only 5% of people are addicted to drug। यानी ये पेशेंट आपके पास बहुत कम आएंगे ड्रग्स से, बिकॉज 5% ही है, उसमें भी 3% जो प्रॉपर ड्रग्स है कोकेन, और 2% ओपियम जो उन्होंने बताया, ओपियम ड्रग्स है जिसमें सिरप और ओपियम की मेडिसिन है, उससे लोग एडिक्ट हो जाते हैं, और 3% प्रॉपर कैनाबिस और उससे मैरिजुआना से एडिक्ट हो जाते हैं। बट 30% ऑफ पीपल, आप सोचो इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, उसमें से 30% ऑफ द पीपल आर एडिक्टेड टू। तो देखो 30% में कितना हुआ, 1.3 बिलियन है ना, हम लोग 1.37 बिलियन है एग्जैक्टली, उसमें से अगर हम 30% निकालें तो कितना हुआ, करीब 45 करोड़ people in India use tobacco in some form, either smoking or smokeless। यानी कितना बड़ा एडिक्शन है इंडिया में। 15% अल्कोहल यूज करते हैं, 15% ऑफ द पीपल यूज अल्कोहल। यानी इसमें क्या होता है, किसी को अल्कोहल टोबैको दोनों की हैबिट हो सकती है, राइट? एंड 5% ओनली यूज ड्रग्स। नाउ टोबैको क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? बिकॉज़
because वो हाई डिपेंडेंसी कर देता है आपने थोड़े से if you try out tobacco through cigarette through बीड़ी through पान मसाला through गुटखा you will get addicted within 10 to 15 days high dependency जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं राइट सो हाई डिपेंडेंसी साइलेंट किलर यानी पीपल जो ये ना एक पॉइंट याद रखना पेशेंट जब भी आपके पास आएगा आप रिकॉर्ड करेंगे कि मैं पीपीटी सबको दे दूंगा सो नो नीड टू रिकॉर्ड एंड यानी इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं है अच्छी चीज में कॉपीराइट नहीं रखना चाहिए मैं आपको दे दूंगा पीपीटी ऑलरेडी सर के पास है पीपीटी तो यू कैन टेक द पीपीटी राइट सो साइलेंट किलर क्यों बताया क्योंकि आपका पेशेंट अगर कोई एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है एडिक्शन इज अ डिजीज एडिक्शन इज नॉट अ हैबिट एज अ साइकोलॉजिस्ट पहली चीज आपको पूरी कन्विंस करना है कि तू बीमार है तेरी आदत नहीं है this is the biggest factor of addiction in India and this is the biggest factor why patient will never approach you for the addiction because वो मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं बीमार हूँ वो तो ये बोल रहे हैं कि आदत है this is my habit and I will leave it on my will but he छोड़ना is not easy है you have to convince him that you are suffering from a disease of tobacco addiction right so this is the और वो क्या होता है 10 साल गुटखा खाएंगे ना 10 साल तंबाकू खाएंगे तब कैंसर होगा तब देखेंगे कोविड में तो क्या हो गया आपने लास्ट सेकंड वेव में देखा 2 हफ्ते में सीरियस डिजीज और वेंटिलेटर से ऊपर तो इतना डरावना नहीं है राइट so people are not worried about this but 8 million deaths worldwide listed drugs this is a disease WHO right tobacco is the single greatest preventable cause of disease death यानी आप साल में 8 मिलियन 80 लाख लोगों की जान बचा सकते हैं राइट नेक्स्ट ये सब यानी जो टोबैको लेते हैं दारू पीते हैं ड्रग्स लेते हैं वो क्या करते हैं अपने 4 से 5 घंटे एडिक्शन में बिता देते हैं तो उतना फाइनेंशियल लॉस कमाने नहीं जाते हैं वो पैसा वो लोग बच्चों के एजुकेशन की जगह अपने ड्रग्स में खर्च करते हैं तो उनके बच्चे अनएजुकेटेड हो जाते हैं फैमिली को बहुत लॉस होता है उसकी वजह से घर में झगड़े होते हैं तो ये सब कॉजेज है ड्रग कार्टेल्स ये सब लास्ट टाइम में बताया और ये है ना ये कहीं कहीं मेडिकल एसोसिएशन में हमारे मेडिकल एसोसिएशन सब ने गवर्नमेंट को बार-बार बताया है कि जो गवर्नमेंट बोलती है ना कि जो ये टोबैको से जो रेवेन्यू आता है सिर्फ टैक्स बोलते हैं उसको इकोनॉमी में टोबैको और अल्कोहल से उसको गवर्नमेंट से बहुत रेवेन्यू मिलता है बट हमने मेडिकल एसोसिएशन में प्रेजेंटेशन दिया था कहीं गवर्नमेंट को कि जितना आप रेवेन्यू टोबैको और अल्कोहल को टैक्स करके जनरेट करते हो उससे ज्यादा आपको हॉस्पिटल्स के फॉर्म में डोमेस्टिक वायलेंस के फॉर्म में ड्रग कार्टेल्स के फॉर्म में इन सब में जाता है क्योंकि सब मींस इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा इतना बच्चों का एजुकेशन सफर करेगा मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होगा उसके बाद सबसे बड़ा है हेल्थ कंसर्न आप टाटा कैंसर हॉस्पिटल का बजट कितना है हर साल 750 करोड़ गवर्नमेंट खाली उसी में डालती है तो जितना रेवेन्यू जनरेट करता है तो ओवरऑल हेल्थ एस्पेक्ट देखें पर्सनल एस्पेक्ट देखें रेवेन्यू एस्पेक्ट गवर्नमेंट को ज्यादा लॉस है नेक्स्ट ओके अब टोबैको होता कैसे है ये बेसिकली इंडिया की पैदाइश नहीं है क्योंकि इंडिया में इतना पुराना होता नहीं ये पोर्टुगीज लेके आए थे इंडिया में और ये बेसिकली ओरिजिनल क्रॉप इज फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका तो टोबैको क्या होता है टोबैको के पत्ते लाए जाते हैं बीज लाए जाते हैं और इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में यूज करें तो उसको सड़ाया जाता है उसको डिग्रेड किया जाता है कैसे धूप में रख के चिमनी से या स्मोक देके उसको सड़ाया जाता है तो सड़ने से क्या होगा उस पत्तों में कैरेमलाइजेशन का प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू ताकि वो मोर स्वीट बन जाए मोर रोजी स्मेल आ जाए मोर पैलेटेबल बन जाए उसका स्मोक उसका जो धुआं निकल रहा है वो मोर स्मूथ हो जाए स्मूथ हो जाए इसीलिए ये प्रोसेस किया जाता है कैरेमलाइजेशन का बट ये कैरेमलाइजेशन करने की वजह से जितने और ये आपको पेशेंट को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिया में सबसे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डेथ होती है तो किससे होती है हार्ट अटैक से होती है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो बीड़ी सिगरेट या टोबैको यूज करता है he is 6 times more has got a 6 times more risk of getting heart attack or cerebral stroke 6 times so ये क्यों होता है ये कैरेमलाइजेशन की वजह से होता है क्योंकि वो कैरेमलाइजेशन एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट या ब्रेन की आर्टरीज में ब्लॉक ला देता है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक आते हैं तो 6 टाइम मोर ये खाली 6 टाइम बोलने से ऐसा लगता है मगर रियली यानी हमें कॉर्पोरेट में पेशेंट्स आते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में स्मोक करते हैं ओवर टाइम करते हैं नाइट ड्यूटी करते हैं 35 40 28 की एज में हार्ट अटैक आ जाते हैं जिस बॉडी को गवर्नमेंट भगवान ने ऐसा बनाया है कि 80 90 साल तक अटैक ना आ जाए उसको 28 इयर्स की एज में अटैक आ जाता है दैट मींस ये समथिंग रॉन्ग
and that is due to this smoking. 6 times smoke और वो कैनिबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट, ओके, ये डिफरेंट फॉर्म्स है। रूरल एरिया में बहुत कॉमनली यूज होते हैं, गुटखा, खैनी, जर्दा, मिश्री, बर्न टोबैको। यानी मिश्री तो इतना रूरल महाराष्ट्र में कॉमन है। हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एवरी वीक में 3 से 4 ओल्ड एज लेडीज गम्स का कैंसर ले जाती है, तो वो से करती है, मिश्री से करती है। एवरी वीक वी यूज्ड टू गेट 3 to 4 गम कैंसर केसेस। नेक्स्ट, स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट। बीड़ी रूरल एरिया में यूज होता है, टोबैको को क्रश करके तेलुगु लीफ डाल के करता है, और ये फिल्टर पेपर यूज होता है। इसमें 10% इट इज बेटर, सिगरेट इज 10% ओनली बेटर, बट 90% जो साइड इफेक्ट्स रहेंगे इसमें फिल्टर होते हैं, तो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो 10% कम लगते हैं, तो सिगरेट इज कॉस्टली, है ना। नेक्स्ट, ओके, मोर एडिक्टिव। ओके, ये आपको पेशेंट को क्या बताना है पता है कि पहला तो you are suffering from a disease, you are not having a habit, you are suffering from a disease, पहले उसको कन्विंस करना है। फिर वो कोई भी टोबैको में सबसे हार्मफुल सब्सटेंस क्या होता है, निकोटीन। निकोटीन इज अ हाईली डिपेंडेंट एंड एडिक्टिव सब्सटेंस, बराबर है। और उसको छुड़ाएंगे तो विड्रॉल सिम्टम आएंगे, एंजाइटी आएगा, स्ट्रेस आएगा, बीपी बढ़ जाएगा, रेस्टलेसनेस होगा, इरिटेशन होगा, स्लीप चली जाएगी, है ना। आप देखते हो कि आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड से स्मोक करता हो, उसको एक उस तरह का स्मोक ना मिले, सिगरेट ना मिले, तो रेस्टलेस हो जाता है, गुस्से वाला बिहेवियर हो जाता है। मतलब पेशेंट को आपको वही एज साइकोलॉजिस्ट का रोल है कि आपको उसको काउंसिल करना है और एक चीज बताना है, आप अगर दिन की एक बार चेंज स्मोकर 20 सिगरेट्स पीते हैं और आप छोड़ देंगे ना, आप मरने वाले हैं। यू आर नॉट गोइंग टू डाई, खाली आपको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, कितने भी सीवियर होंगे, क्योंकि पेशेंट को ये डर लगता है जब वो छोड़ते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे बहुत रेस्टलेसनेस हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, मगर आपको उसको पहले से मेंटली रेडी करना पड़ेगा। विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, मगर यू आर नॉट गोइंग टू डाई, दिस इज माय गारंटी। तो आपकी बात पे विश्वास करके धीरे-धीरे छोड़ने का ट्राई करेगा। नेक्स्ट, ओके, ये है ना, ये फोटो अवेलेबल है। ये सिगरेट्स में सारे यूज होते हैं केमिकल्स, ये सारे केमिकल्स में एक का नाम नहीं लूंगा, और देखो कितने टॉक्सिक गैसेस हैं, ये सारे केमिकल्स में यूज होते हैं। इनका देखो कहां-कहां यूज होता है, टॉयलेट क्लीनर, सीवर गैस, बैटरी, पॉइजन, इंसेक्टिसाइड, ये सब। ये फोटो दिखाने का है क्या यूज कर रहे हो आप, अपनी बॉडी में ये सब चीज डाल रहे हो क्या। और ये एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको है ना, टीनेजर्स लेवल टू 21 में ये फोटो बहुत ही इफेक्टिव होगा, है ना, टीनेजर्स के लिए। नेक्स्ट, सुपारी, ये इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में सोशलाइजिंग का माध्यम है, यानी हम किसी के घर पे जाके सुपारी देते हैं, पूजा में सुपारी यूज करते हैं, राइट। बट सुपारी में एक केमिकल होता है एरेकोलिन, एरेकोलिन, वो क्या करता है, मुंह का कैंसर करता है, मुंह में फाइबर्स फॉर्म कर देता है, सब म्यूकस फाइबर, बहुत ही सीवियर डिजीज है, इसलिए गवर्नमेंट ने गुटखा बैन किया है। नेक्स्ट बताऊंगा उसका। नेक्स्ट, बट ये बहुत कॉमन एडिक्टिव सब्सटेंस है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, यू सी दिस। पेशेंट का बहुत सारे पेशेंट मुंह नहीं खोल पाते हैं, या कुछ भी खाएंगे तो तीखा गरम लगता है, क्योंकि तो वो सुपारी की आदत होती है, गुटखा की आदत होती है, ये पूरा ब्रांच व्हाइट एरिया हो गया है, और धीरे धीरे इसमें कैंसर डेवलप होगा। तो जो सुपारी खाते हैं उनको बताना है कि आपके मुंह में फाइबर कम हो जाएंगे, मुंह खुलना बंद हो जाएगा, चमड़ी पतली हो जाएगी, तीखा गरम लगेगा, और धीरे धीरे उसमें टर्न इनटू कैंसर। नेक्स्ट, अच्छा, कॉजेज फास्ट फास्ट करेंगे। पेरेंट, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी की स्टडी हुई है कि एंड 30 इयर्स तक उसने स्टडी किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, कि जिसके पेरेंट्स स्मोक करते हैं ना, जिसके पेरेंट्स दोनों में से एक स्मोक करता है, 50% चांस है कि उसका चाइल्ड एडिक्ट हो जाएगा। तो जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको आप जब काउंसिल करते हैं तो ये पॉइंट याद रखना कि जब आपका बच्चा देखेगा आपको स्मोक करते हुए, 50% चांस है, क्योंकि क्या होता है, अप टू दैट चाइल्ड एज, जिसको हम 12 इयर्स बोलते हैं, पीडियाट्रिक एज, 12 साल तक बच्चे के दो ही रोल मॉडल्स होते हैं, कौन, पेरेंट्स एंड टीचर्स। जब वो टेक्स्ट बुक में पढ़े, कोई उसको सुनाए, वो उस पे उतना इफेक्ट नहीं डालेगा जितना वो देखता है। उसको देखता है कि मेरा फादर तो इजीली स्मोक करते हैं, मेरी मम्मी तो इजीली गुटखा लेती है, तो उसको माइंड में एक चीज बैठ जाएगा कि ये सही है, तभी मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। तो आप जब एडल्ट पॉपुलेशन को काउंसिल करेंगे, ये पॉइंट जरूर रखेंगे, जब आप टॉबैको, अल्कोहल या कुछ भी लेते हैं एडिक्टिव सब्सटेंस, तो आपका बच्चा 50%, क्योंकि उसने यंग एज में उसके माइंड में बैठ गया कि यार मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं तो ये तो सही होगा, है ना। एंड सेकंड इज टीचर, टीचर मैं उसका टीचर, तो मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ, मेरे साथ मेरे
बहुत ही सीनियर एचओडी थे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के। हम लोग कैंसर को ऑपरेट करके ओटी से बाहर निकले, ऑपरेशन थिएटर से 6 घंटा ऑपरेशन चला, बाहर निकले, पहली चीज मेरे एचओडी ने क्या किया, स्मोक किया। अब बाकी जितने बच्चे देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे, है ना। सो टीचर्स एक रोल मॉडल, इसलिए हमको टीचर्स को हम इंडियन में क्या कहते हैं, आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाए, जो अपने व्यक्तित्व से सिखाए, इसलिए उसको आचार्य कहते हैं। तो टीचर्स एंड पेरेंट्स का बहुत ये, और ये एडिक्शन छुड़ाने में आपका रोल होगा। पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप को क्या होता है, अपने लिए नहीं छोड़ते पर अपने बच्चे के लिए सब छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। सो यू हैव टू कन्विंस देम फास्ट। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा इंडोनेशिया का केस है। इसके पेरेंट्स दोनों स्मोक करते थे, 18 मंथ्स ओल्ड बेबी है, रोज के 12 सिगरेट्स पीता है। एक सिगरेट उसको नहीं दिया तो मिल्क नहीं पिएगा, मदर का इरिटेबल हो जाएगा, फीवर आ जाएगा। ये क्लासिक केस है। नेक्स्ट, पीयर प्रेशर। आप सबकी एज, ये जो आपकी एज है ना 25 तक, इसमें पीयर प्रेशर बहुत होता है। मैं ग्रुप में हूँ, मेरे ग्रुप में सब स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो मुझे ग्रुप का पार्ट बनना है, तो मुझे भी पीना पड़ेगा। इसमें मैं एक चैलेंज आपको देता हूँ, नो नो नो, नो इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं स्मोक करूंगा, नो। हैव द करेज टू टेल नो। यस कहना इज अ साइन ऑफ वीकनेस। जनरली क्या कहना जाता है, कि ग्रुप में सब करते हैं ड्रिंक, तो मैं करता हूं तो यस, तो मैं स्ट्रेंथफुल हूं। ऐसा नहीं है, रॉन्ग। आपको ये बोलना है अपने ग्रुप में, नो, नो इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये आपको ना बोलना जीवन में सीखना है। आपके एग्जाम से दोस्त आएंगे, चलो मूवी देखने ले जाते हैं, है ना, आप ग्रुप का पार्ट है तो, बट यू हैव टू टेल नो। नो इज ऑलवेज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट द साइन ऑफ, ये आपके लिए है, सबके लिए। नेक्स्ट, फास्ट। ये बहुत ही फेमस केस है। 1960s 70s में जब ये एडवर्टाइजमेंट बैन नहीं थी ना, जितना अवेयरनेस नहीं था ना, तो ये क्या करते, इसकी स्टोरी बताइए। एल्विस प्रेस्ली का नाम सुना होगा, बहुत फेमस पॉप सिंगर हुआ है। उसको ब्रिस्टल ने है ना हायर किया था, तो वो अपने कंसर्ट में स्टेज से स्मोक करता था ऐसे। तो उसको देख के ना अमेरिकन कई यूथ पॉपुलेशन पूरी एडिक्ट हो गई पूरी, और उसमें से ये एनीटाइप एक है। अब ये इतनी एडिक्टेड है, उसको अपर एरने का कैंसर हो गया था, तो उसका लैरिंक्स निकाल दिया, सॉरी उसका अपर इसोफेजियल, सॉरी अपर ये पोस्चर पिलर्स का कैंसर हो गया था, माउथ, पोस्टीरियर माउथ एरिया का, तो वो एरिया निकाल दिया है। अब तो यहाँ से स्मोक नहीं कर सकती, तो क्या करती है कि ट्रेकियोस्टोमी किया, डायरेक्ट ट्रेकिया में रेस्पिरेटरी ट्रैक में होल किया, तो यहाँ सिगरेट रख के स्मोक करती है। शी सो मच एडिक्टेड। इसका सिग्निफिकेंस मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, जितना पेशेंट जल्दी एज में एडिक्टेड होगा ना, जितना जल्दी एज में, जितना अर्ली लाइफ में एडिक्ट होगा ना, उतना छोड़ना डिफिकल्ट है। जितना लेट एज में होगा उतना छोड़ना इजी है, क्योंकि उसकी बिहेवियर में वो बैठ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि टीनेजर्स को तो बचा के रखें, बिकॉज इसको हैबिट लगी थी 12 इयर्स ऑफ एज में, आज वो है 58 की, तो अब उसका छोड़ना, जिसने 30 साल स्मोक किया है वो नहीं छोड़ पाएगा। तो जितना अर्ली एज में एडिक्शन होगा उतना छोड़ना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, स्ट्रेस। हमको स्ट्रेस रिलीव करना नहीं आता। अरे एग्जाम का स्ट्रेस है तो बच्चे एम्फेटामाइन्स लेते हैं, एग्जाम का स्ट्रेस है तो स्मोक करने जाते हैं। स्ट्रेस रिलीव करने के बहुत सारे वेज हैं, डॉक्टर लखविंदर बताएंगे आपको। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन। अरे ये रूरल इंडिया लोअर इकोनॉमिक क्लास में कॉमन है। मैं हॉस्पिटल की बात करता हूँ, मेरा प्यून था, रोज की ना 20 बीडीज पीता था, तो मैं उसको काउंसिल करके छुड़वाया, तो मेरे ही डिपार्टमेंट में प्यून था, तो उसने 3 दिन छोड़ दिया, चौथे दिन फिर से पीने लगा। मैंने भाई क्यों, क्या हो गया, तेरे को इतना समझाया है ना, तो देन व्हाई यू आर टेकिंग इट। सो उसने बोला सर मेरे को 2 दिन से टॉयलेट ही नहीं लगी, 2 दिन से क्यों, क्या होता है, निकोटीन लेते हैं ना, निकोटीन इंटेस्टाइन की मोबिलिटी को बढ़ाता है। तो जब आप चाय पीते हैं उसमें भी निकोटीन होता है, तो निकोटीन से थोड़ी इंटेस्टाइन में मोबिलिटी बढ़ाता है ना, तो आपको स्टूल पास होता है। तो जिसने एकदम हैबिट छोड़ दी है ना, उसको ये साइड इफेक्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास ऐसा पेशेंट आएंगे तो आप क्या करेंगे। देयर आर 2-3 ways to relieve constipation. मेडिकल एलोपैथी में हम बिस्कोडिल देते हैं, इसबगोल देते हैं, आयुर्वेद में हम त्रिफला यूज करते हैं। त्रिफला लीजिए आप, 2-3 योगासन है, ताड़ासन, पीरियड ताड़ासन एंड कटी चक्रासन, ये 3 आसन कभी आपको नेक्स्ट टाइम सिखाएंगे कि कैसे इसको यूज करके आप कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, ये बहुत ही कॉमन था हमारे हॉस्पिटल में, खासकर ड्राइवर्स आते थे तो उनको बोलते थे कि तो क्या बोलते थे, 2 जस्टिफिकेशन देते कि रात को हमको अकेलापन लगता है, इसलिए मुंह में हमेशा कुछ रखते हैं, डर लगता है, और रात को हमको जगना पड़ता है ड्राइविंग करते वक्त, इसलिए हम स्मोक करते हैं या टोबैको लेते हैं।
तो फिर धीरे धीरे हम उनको समझाते हैं कि भाई आप जीने के लिए कमा रहे हो या कमाने के लिए जी रहे हो, क्योंकि ये 7-8 साल में अगर रेगुलर हैबिट है तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसिव स्मोकिंग। ये तो है ना, जब आप काउंसिल करें ना एज ए काउंसलर, तो पूरी फैमिली को बुलाएं और उसका बेटा बैठा हो, उसकी वाइफ बैठी हो, उसके ओल्ड एज पेरेंट्स बैठे हो, उसके सामने बोले कि जितनी सिगरेट आप पीते हैं, जितना साइड इफेक्ट होता है उतना आप अपने बच्चों को और फैमिली को भी देते हैं। पैसिव स्मोकिंग है, क्योंकि वो तो स्मोक नहीं कर रहा है ना, फैमिली तो नहीं कर रही है, मगर आप घर में स्मोक कर रहे हैं तो उसका असर होता है। नेक्स्ट, ये स्टैटिस्टिक्स है, 40% ऑफ द इंडियंस आर एक्सपोज्ड टू पैसिव सेकंड स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग से। यानी एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन आप क्या करेंगे, कोई भी पब्लिक स्पेस में स्मोक कर रहा है ना, तो आपका एक्ट है गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट से पास है, कोई पब्लिक स्पेस में स्मोक नहीं कर सकता। एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन शर्मा ने कहा इसको तुरंत बोलने का, सर यू आर नॉट अलाउड, मैडम यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक, ऐसा है ना, सो प्लीज डोंट स्मोक। और मैं बोलूं 32% को घर में सेकंड हैंड स्मोक मिलता है, यानी फैमिली मेंबर। 30%, 28% को ऑफिस प्लेस में सेकंड हैंड स्मोक मिलता है, ऑफिस में तो आप कर ही सकते हैं स्ट्रिक्टली, और 7% रेस्टोरेंट्स में मिलता है। सो अब कितना सेकंड हैंड, ऑलरेडी इतना टॉक्सिक है एनवायरनमेंट, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इतने व्हीकल्स की वजह से उसमें ये और पोल्यूशन जा रहा है। नेक्स्ट, ओके, ये सब आपके लिए है, यंग जनरेशन के लिए है। क्या होता है 31st नाइट, 31 दिसंबर की नाइट, यानी इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट यूथ फेस्टिवल है, राइट, 31st नाइट, है ना। तो मैंने अपना यूजी किया, पीजी किया, 10 साल में हॉस्टल में रहा हूँ, राइट, यूजी पीजी में भी। तो 31st नाइट यानी तो इंडियन नेशनल यूथ फेस्टिवल है। तो क्या करेंगे, बच्चे जाएंगे और उस दिन जो नहीं पीता है ना वो भी ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ग्रुप में क्या बोलेंगे, एक बार तो चख ले यार, एक बार तो देख ले कैसा लगता है। तो जो नहीं करते हैं वो भी करेंगे। बट ये मैं आपको क्यों स्लाइड दिखाई, व्हाई, देखना आपकी बॉडी क्या बोलती है और आपका माइंड क्या बोलता है, इसके लिए फर्स्ट डोज वेरी वेरी गुड। जब आप पहली बार स्मोक करेंगे ना, इंटेंस कफिंग होगा, आपको इंटेंस कफिंग हेडेक होगा। इसका मतलब आपकी बॉडी को पता है कि ये टॉक्सिक चीजें, इसलिए उसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है कफिंग से। मगर ब्रेन क्या करता है, जब आप स्मोक करेंगे ना तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा, वो आपको एक हैप्पीनेस और यूफोरिया देगा। बॉडी रिजेक्ट कर रही है मगर माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रेन में क्या हुआ, डोपामिन रिलीज हुआ, तो सेंस ऑफ हैप्पीनेस आई। और हमारे स्पिरिचुअल साइंस में क्या कहा है, बॉडी से ऊपर माइंड है, माइंड का कमांड बॉडी से ऊपर होता है। माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया तो फोर्सफुली बॉडी से एक्सेप्ट कराएगा, राइट है ना। तो वही विड्रॉवल में भी वही काम करता है। एक बार पेशेंट का मन आपने बना दिया एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उसकी बॉडी में जो विड्रॉवल सिम्पटम्स आएंगे ना वो कंट्रोल कर सकता है। सो यू हैव टू कंट्रोल द माइंड ऑफ द पेशेंट। सो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी आपको फर्स्ट डोज देना, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट डोज देना, नो हैव, बिकॉज़ नो इज स्ट्रेंथ एंड यस इज, सो ये आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं, आप भी 31st करेंगे, है ना। सो ये आपके लिए है, तो से नो इफ एनीवन इज ऑफरिंग। ओके नेक्स्ट, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, आई एम एडिक्टेड टू दिस। सो ये कैसे होता है, नेक्स्ट, ओके, अब मैं आपको एक रिवॉर्ड सर्किट होती है, आपने पढ़ा है क्या इसको, रिवॉर्ड सर्किट इन द ब्रेन। तो जब आप खाते हैं ना कुछ भी अच्छी, यानी प्लेजेंट, स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, अगर आपको पसंद है तो आपका बीटीए सेंटर होता है, वो स्टिमुलेट होता है, वेंट्रल टैगमेंटल एरिया बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम में होता है। और बार-बार लेते हैं ना तो बीटीए क्या करता है, न्यूक्लियस एक्यूबल्स को, जो रीइंफोर्सिंग सेंटर होता है, उसको स्टिमुलेट करता है, तो एक सर्किट बन जाती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। तो क्या होता है, बार-बार वो करने का मन करता है, क्योंकि आपका रीइंफोर्सिंग सेंटर और प्लेजर सेंटर एक्टिवेट होता है। यानी जो स्मोक करता है ना, उसने नहीं, उसके ब्रेन में क्या होगा, क्रेविंग होने लगेगा, उसको बार-बार बुलाएगा कि नहीं नहीं बार-बार कर, और जो बॉडी को हार्म हो रहा है, मगर माइंड में क्या हुआ है, प्लेजर सेंटर स्टिमुलेट हो चुका है, राइट। नेक्स्ट, ओके, ये बहुत एज ए स्टूडेंट लाइफ में ये 4 हार्मोन्स का आपको रोल पता होना चाहिए, और ये आपको अपने पेशेंट को भी समझाना है। ये 4 हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस है, 4 हार्मोन्स ऑफ एंडोर्फिन्स। इसका एग्जांपल आप सबको पता है, आप जब जिम जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, बॉडी में तो पेन होता है ना, पर माइंड को अच्छा लगता है। जो रेगुलरली जिम करते हैं या योगा करते हैं, वो एक दिन लेकर के तो उसका डिफरेंस उनको आएगा, उस दिन लेथार्जी रहेगी, वीकनेस रहेगा। तो क्या होता है, जब आप योगा करते हैं, जिम जाते हैं, तो क्या होता है, बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। तो एंडोर्फिन्स आपके ब्रेन में गुड फीलिंग देते हैं, आपका पेन रिलीव कर देते हैं, जो आपको पेन हुआ है ना योगा जिम से, वो रिलीव कर देते हैं। सो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। सेकंड, डोपामिन,
आप जो भी एडिक्शन करते हैं ना, ये सिगरेट है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, वो ब्रेन में क्या करता है, डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है, यूफोरिया देता है, एनर्जी देता है, एक्साइटमेंट देता है। इसलिए हम बार बार, दिस इज द बेसिक, एज साइकोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए, हमारा बेसिक नेचर है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड पीस। ये हमारा बेसिक नेचर है। तो हम, कोई लोग एडिक्शन से अचीव करते हैं, कोई लोग दूसरे को सर्व करके अचीव करते हैं, कोई लोग योग मेडिटेशन से अचीव करते हैं। हर आदमी पीस एंड हैप्पीनेस अचीव करना चाहता है। तो डोपामिन वो देता है ना, डोपामिन वो देता है। आपका जब अच्छा रैंक आ गया, आपको अच्छी जॉब मिल गई, तो यू फील हैप्पी, भाई ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ। इसलिए डोपामिन का यूज मैंने अपने पर्सनल लाइफ में किया। मैं अपनी वाइफ की हमेशा तारीफ करता रहता, सो शी ऑलवेज फील हैप्पी। ऐसा सो क्या है, किसी की आपकी कोई तारीफ करेगा ना, आपके ब्रेन में हैप्पीनेस आएगा। इससे मेरा झगड़ा कभी नहीं होता है ऐसा। ओके, ऑक्सीटोसिन, फोर्थ हार्मोन लेता हूं। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है क्या? ओ लास्ट बेंचर, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है क्या? तो उसमें जादू की जप्पी है ना, ये ऑक्सीटोसिन से निकलती है जब फिजिकल टच आता है ना। क्यों? आप देखना, मदर जब इन्फेंट है ना, मदर के निपल को टच करता है ना, तो मिल्क रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और आपसे जब हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, है ना। व्हाई? बिकॉज़ ऑक्सीटोसिन इज रिलीज इन योर ब्रेन। इसलिए मैं टीचर्स को तो हमेशा कहता हूं, अपने स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट करें, पैट करें, तो क्या होता है, उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा एंड दे विल फील वेरी हैप्पी। सो ऑक्सीटोसिन एंड सीरोटोनिन, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो मनुष्य को देता है, वो सीरोटोनिन है। वो कब रिलीज होता है? जब आप सेवा का कार्य करते हैं, सेवा, सेल्फलेस सर्विस। इसलिए एवरी रिलीजन में, चाहे हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी, हर चीज में सेवा, सेल्फलेस सर्विस बताए। आप ऐसा कोई काम आप रोज करके देखिए, एक दिन में एक ऐसा काम करिए जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता मगर सामने वाले का अच्छा होता हो। चाहे वो ट्री प्लांटेशन हो, ब्लड डोनेशन हो, गरीब बच्चों का एजुकेशन हो, कोई भी ऐसा काम करिए जिसमें आपको कुछ नहीं मिला पर सामने वाले का कुछ अच्छा हो गया। इसको कहते हैं सेल्फलेस एक्टिविटी। और जब आप सेल्फलेस एक्टिविटी करेंगे ना, तब आपके ब्रेन में सीरोटोनिन रिलीज होगा और वो उस दिन आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। और आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं भी साइंस के स्टूडेंट हूं, आप ये करके देखिएगा एंड देन यू विल, मैं कह रहा हूं इसलिए आप करके देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओके, सो टोबैको में क्या होता है? टोबैको में मेन चीज जो एडिक्ट करती है होती है निकोटीन। बट टोबैको और सिगरेट में उसके साथ 700 केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो मैंने आपको फोटोज में दिखाए ना। तो उसमें से 70 जो केमिकल्स होते हैं वो कैंसर कॉजिंग, कार्सिनोजन बोलते हैं। तो प्योर निकोटीन खाली एडिक्टिंग है, मगर उसके साथ जो बीड़ी सिगरेट में 700 केमिकल्स यूज होते हैं ना, that is causing harm to your body, to different parts of your body, mouth, lungs, intestine, heart, है ना। सो पहले तो पेशेंट को ये बताना है कि ये जो एडिक्टिंग सब्सटेंस है ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है एंड देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ यूज। आपने 2 सिगरेट पिया, 1 सिगरेट पिया, 1 पूरी तंबाकू खाई, वो भी हार्मफुल है। जैसे हम मेडिकल साइंस में कहते हैं ना कि पैरासिटामोल का सेफ लेवल ऑफ यूज है। आप 500 मिलीग्राम क्रॉसिंग दिन में 6 से 8 बार ले सकते हैं, यानी 4000 मिलीग्राम तक आपको सबसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट कोई भी एडिक्टिंग सब्सटेंस, चाहे टोबैको हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, देयर इज नो सेफ लेवल एंड आप एक चीज करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, ओके, देखो गॉड कितना मर्सीफुल है। कोई भी पेशेंट कोई भी एडिक्शन लेता है ना, तो इनिशियल स्टेज में बॉडी उसको साइन देता है कि भाई अभी छोड़ दो, अभी तक नहीं छोड़ा तो बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इनिशियल स्टेज में पेशेंट को ये व्हाइट पैच होता है मुंह में, यानी जब टोबैको का एडिक्शन, आपके पास अगर 10 पेशेंट रहेंगे तो सिर्फ 5 से 6 पेशेंट तो टोबैको से एडिक्टेड रहेंगे, चाहे वो सिगरेट हो या तंबाकू गुटखा हो। तो आप उनके मुंह में देखिएगा ऐसे व्हाइट पैच दिखेंगे, क्रॉनिक, इसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। दिस इज अ प्री कैंसरस लीजन। ये स्टेज में अगर पेशेंट छोड़ देता है ना, ये स्टेज में, तो ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। और ये 5 से 6 साल के बाद टोबैको खाने के बाद, 2 से 3 साल में सिगरेट यूज करने के बाद ये मुंह में व्हाइट पैच आता है, इसको प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। ये पेशेंट को है ना, आप खाली बताएंगे ना तो उससे वो डरेगा नहीं, पर जब आप उसके मुंह में फोटो खींच के दिखाएंगे तो ये प्री कैंसरस लीजन है, इसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ये स्टेज में नहीं छोड़ा तो ये 3 साल में प्रॉपर कैंसर में बदल जाएगा। आपके लिए वार्निंग साइन है, आपके लिए वार्निंग। तो पेशेंट मेंटली भी डर जाएगा। आपने इमोशनली तो उसको चार्ज अप कर दिया है, बट फियर फैक्टर भी डाल दिया है कि आप प्री कैंसर स्टेज में। इस स्टेज में नहीं छोड़ा तो नोबडी कैन हेल्प। ये स्टेज रिवर्सिबल है। उसके आगे वाला स्टेज रेड पैच आ जाता है, जिसको एरिथ्रोप्लाकिया बोलते हैं। ये सीवियर प्री मैलिग्नेंसी है। दिस इज द हाई एंड
ऑरेंज रेड अलर्ट बोलते हैं ना, रेड अलर्ट, वैसा रेड अलर्ट है। इस स्टेज में नहीं छोड़ा, देन विदिन 6 मंथ्स टू एक ईयर में ओरल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर इसमें बदल जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारे केस काफी केसेस रेगुलरली देखते हैं। अब नेक्स्ट, हेल्दी लंग, स्मोकर्स लंग। आपने कोविड में देखा होगा, ये मैंने क्यों लंग दिखाया है, ये एम्स में बहुत अच्छी स्टडी हुई थी। 8 साल 10 साल के बच्चे का लंग आज ऐसा हो रहा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से। तो हम सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हमको अपने हर बर्थडे पर एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि नीरी की स्टडी है कि हम साल में 2 पेड़ का ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, मगर मदर नेचर को कुछ तो लौटाना है। हम इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन कर रहे हैं। आज 8 साल के बच्चे का लंग 60 साल के स्मोकर के बराबर हो जाता है। क्यों? बिकॉज इतना पोल्यूशन है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ह्यूमन बीइंग, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपनी जनरेशन की हर बर्थडे को आप एक डिटर्मिनेशन दे, एक पेड़ तो लगाऊंगा। तो जब तक आप अभी 20 के 100 होंगे तो आप 80 पेड़ लगा चुके हैं, राइट। नेक्स्ट, स्मोकर्स लंग में क्या होता है, स्मोकर्स लंग में एस रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने कोविड में देखा होगा कि जो स्मोकर्स थे ना, वो जल्दी वेंटिलेटर्स पर जा रहे थे, क्योंकि कोविड का जो वायरस है वो एस रिसेप्टर से अटैच होकर आपके लंग में जाता है। मेरे में 100 रिसेप्टर्स हैं एस के, सपोज, तो स्मोकर में 100 गुना ज्यादा होंगे। तो कितना हुआ, 10,000 रिसेप्टर्स उसमें हुए, मेरे अंदर 100 है, तो उसके अंदर 10,000 वायरस जाएंगे, मेरे अंदर 100 जाएंगे। स्मोकर्स की डेथ भी ज्यादा हुई थी, 8 to 10 times they have suffered death and serious disease because उसमें एस रिसेप्टर्स आते हैं। मैंने ये आपको सबको बताया, यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, रियली अ बड़ी ट्रेंड। आप सबको ये समझना है, जो आपके पास कॉर्पोरेट्स में आए, जो स्ट्रेस लेके आए, कि आप एडिक्शन मत कीजिए, अल्कोहल और सिगरेट्स मत यूज कीजिए, क्योंकि वो आपके हार्ट को, ब्रेन को ब्लॉक कर रहे हैं, आर्टरीज को। आपको यंग एज में, मींस 40 की एज में स्ट्रोक आना, यानी इट्स यानी हम कितना गलत ट्रेंड में जा रहे हैं। 30 की एज में हार्ट अटैक आ रहा है, सो नॉट एक्सेप्टेबल, आपको उनको समझाना है। नेक्स्ट, ये मेरे पेशेंट है, अब ये ड्राइव करता था, अब वो क्या है, रोज का 2-3 हजार रुपए कमाता था ड्राइव करके, उसके बच्चे को लेके आया था गांव से, या पढ़ाता था। ये ऑपरेशन हुआ, 8 लाख रुपए खर्चा हुआ, सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी का, प्लस डेबिलिटेशन। आप देख लीजिए, उसको प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट लगेगा। अब ये क्या कमा पाएगा? अब क्या हुआ, उसके बच्चे का स्कूल छुड़ाना पड़ा, है ना, बच्चे का स्कूल छूट गया, उसकी वाइफ है वो घर घर जाके बर्तन मांजती है। क्या हुआ, यानी हम उनको यही समझाते हैं कि भाई आप जीने के लिए कमा रहे हैं, कमाने के लिए जी रहे हैं। आप 8-10 साल में पैसा तो कमा लेंगे, मगर वो जो डिजीज आएगा वो आपके 10 में नेक्स्ट आने वाले 10 साल का भी पैसा ले लेगा। अभी कुछ बोल नहीं सकता तो क्या कमाएगा, कि क्या करेंगे, है ना। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। नेक्स्ट, ये फर्स्ट सेंटेंस मैं बार बार बोलूंगा, हैबिट नहीं है, दिस इज अ डिजीज एंड इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। सो कैसे करेंगे, खुद छोड़ें, फैमिली हेल्प करें, डॉक्टर की हेल्प लें, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, साइकोलॉजिस्ट का, है ना। ओके, और रिलैक्सेस याद रखना, 50% एडिक्शन के पेशेंट रिलैक्स होंगे। आपको वो मेंटलिटी बना के ही चलनी है, 50% रिलैक्स होंगे, बिकॉज ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। हैबिट चेंज करना है ना, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हैबिट से आदमी का कैरेक्टर बनता है। यानी आप जब कोई भी एक्शन करते हैं, विवेकानंद का बहुत अच्छा थॉट है, रिपीटेड एक्शन क्या करता है, हैबिट बनाता है। रिपीटेड हैबिट्स आपके कैरेक्टर बनाता है, और जैसा कैरेक्टर होगा वैसा ह्यूमन बीइंग होगा। तो आप जीवन में जो भी एक्शंस करते हैं, सोच समझ के करें, बार बार सोच के करिए, इज राइट और रॉन्ग। सो आपको रिलैक्सेस के लिए रेडी रहना है। आपने अगर 100 पेशेंट को काउंसिल किया है, उसमें से 50%, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 50% चाहे वो ड्रग में तो ज्यादा होगा, कोकेन में तो ज्यादा होगा, अल्कोहल एंड टोबैको में भी 50% रिलैक्स होगा। आपको एक मेंटल पेशेंस रख के उनको कन्विंस करके जाना है ना। यू शुड नॉट लूज योर होप, राइट। नेक्स्ट, क्योंकि टाइम हो रहा है, लखविंदर सर कब से मेरे तरफ देख रहे हैं, ये कब नीचे उतरेंगे। ओके, ये है ना, ये प्रैक्टिकल टिप है, ये 4 प्रैक्टिकल टिप है एडिक्शन को छुड़वाने के लिए। इसमें खास टोबैको एंड अल्कोहल, तो मोस्ट आपके पास 80% पेशेंट्स, 85%, 90% इसके लेंगे, तो 4 Ds, ये बहुत सिग्निफिकेंस है। देखना, ये आप प्रैक्टिकल, किसी को अगर समोसा या आइसक्रीम अच्छी लगती है, मेरे को दोनों चीज अच्छी लगती है, बट मैं मंगवाना मत आज, ठीक है ना। सो अगर मेरे को बहुत तलब लगी है आइसक्रीम की, मींस क्रेविंग है, आपको अगर किसी को अच्छा लगता है जो भी, आप 10 मिनट है ना उस क्रेविंग को कंट्रोल कर लीजिए, वो चली जाएगी।
आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। तो जो पेशेंट टोबैको और अल्कोहल ले रहा है ना, आपको क्या करना चाहिए, उसको 10 मिनट बोलना है, सिर्फ 10 मिनट्स, विदिन 4 to 5 मिनट्स क्रेविंग और अर्ज चली जाती है। तो आपको उनके फैमिली मेंबर्स को काउंसिल करना है कि 10 मिनट आपको बहुत मीन्स आपने हैबिट छोड़ दी है, आप लास्ट स्टेज ऑफ लिविंग द हैबिट में है ना, तो पेशेंट को क्या बोलेंगे, आपको बहुत तलब लगी है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो 10 मिनट उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। फैमिली मेंबर्स को क्या बोलना है, तो 10 मिनट कंट्रोल करना है, पेशेंट को बोलना है 10 मिनट। कैसे कंट्रोल करेंगे, डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथ करेगा तो ब्रेन में ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा, तो जो डोपामिन के केमिकल्स हैं, कार्बन के केमिकल्स हैं, वो रिमूव आउट हो जाएंगे। पानी पीने से क्या होगा, ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो वो केमिकल्स रिलीव हो जाएंगे, है ना। जब आपको बहुत गुस्सा आता है तब भी यही बोलते हैं ना, थोड़ा पानी पियो, डीप ब्रीथ करो, राइट, है ना। सो दिस आर द वेज, 4 Ds, धीरे। फर्स्ट स्टेप इज, अगर उसने एक बार अपने अर्ज को या क्रेविंग को डिले कर दिया ना, तो इज मोर क्लोजर टू डी एडिक्शन। तो आपको ठीक कराना सिखाना है, डीप ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग वाटर, डिस्ट्रैक्शन, यानी वो 10 मिनट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ब्रीदिंग के बाद भी, पानी पीने के बाद भी, तो क्या करना चाहिए, आपको जो म्यूजिक अच्छा लगता है वो सुनिए, आप वॉक करने चले जाइए, पब्लिक प्लेसेस में चले जाइए, वहां तो आप स्मोक नहीं कर सकते, गुटखा नहीं खा सकते, राइट। तो उनको बताना है कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको कोई गेम अच्छा लगता है, वेब सीरीज अच्छा लगता है, वो देखने लग जाइए। तो डिस्ट्रैक्ट 10 मिनट्स बहुत ज्यादा समय, 5 to 6 मिनट डिस्ट्रैक्शन हो गया ना, तो अर्ज को ओवरकम कर जाएगा, है ना। ये उनको टीच दें। नेक्स्ट, स्पेंड टाइम विद फैमिली, डोपामिन रिलीज होता है। आजकल क्या हो गया है, हर एक के पास अपना मोबाइल है, टीवी है, अलग अलग रूम में देखते रहते हैं, एक दूसरे को फेसबुक पर मिलते हैं, है ना, ब्रदर, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। बट स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली इंक्रीजेस डोपामिन इन योर ब्रेन, तो वो हैप्पीनेस को बढ़ाता है। नेक्स्ट, स्पेंड टाइम, इसलिए तो लोग पार्क में जाते हैं, रिजॉर्ट्स में जाते हैं, प्लेसेस में जाते हैं, मनाली जाते हैं, क्यों, क्योंकि प्योर एनवायरनमेंट में अपने ब्रेन में डोपामिन, इसलिए पेशेंट को आप क्या बोलेंगे कि गार्डन में एक वॉक कर लो, उसके ब्रेन में ऑटोमेटिक डोपामिन रिलीज होगा, तो एडिक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आप सबके काम का है, ये मोबाइल एप्स इंडिया में अवेलेबल है, क्विट जीनियस, क्विट नाउ। ये क्विट लाइन और मिस कॉल है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट की है, और ये संडे को भी मैंने कॉल करके देखा था, वो 2 मिनट में कॉल बैक करते हैं, मैंने और पूरा आपको टेक्निक सिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे आप छोड़ सकते हैं, तो ये हेल्पलाइन से। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में 90% अप्रोच ही नहीं करते, तो उनको लगता ही नहीं है बीमार है ना। ई सिगरेट्स आर इक्वली हार्मफुल, बिल्कुल एडवाइस मत करना किसी को, दिस आर इक्वली हार्मफुल, और ये यंग जनरेशन में खास आ रहा है ना। ये अल्कोहल एनोनिमस एक बहुत अच्छी, आपने सुना है क्या, अब साइकोलॉजिस्ट है कि कुछ ऐसे लोग थे जो एक टाइम में खूब ड्रिंक करते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया, तो क्या करते हैं ये लोग, अगर मैं अल्कोहलिक हूँ और मुझे बहुत अर्जिंग हो रही है, क्रेविंग हो रही है, तो मैं फोन करूंगा अल्कोहल एनोनिमस में, तो आजू बाजू के जो पहले ड्रिंक करते थे, अब छोड़ के वो आएंगे, आपके साथ बातें करेंगे, गेम्स खेलेंगे, आपको घुमाने ले जाएंगे, तो क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपकी अर्ज धीरे हो गई। ये टेक्निक यूज करते हैं। नेक्स्ट फास्ट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आप जब काउंसिल करते हैं ना अपने पेशेंट को, तो फैमिली मेंबर को समझाना कि जो एडिक्टेड है ना, उसको क्रिटिसाइज ना करे, अरे तू तो बेवड़ा है, तू तो नशा करता है, तू तो चर्सी है, ये सब नहीं करना है, तो वो और नेगेटिविटी और एडिक्शन में जाएगा। फैमिली मेंबर्स को हमेशा पेशेंट को एनकरेज करना है, नहीं यू कैन लीव इट, वी विल हेल्प यू, ऐसा फैमिली मेंबर्स को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, कभी पेशेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को खास बताना है। और जब कोई छोड़ना चाहता है ना, तो उसको समझाना चाहिए, सबको बता दो, जितने आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, तो क्या होगा, सब उसको बार रेकमेंड करे, हाँ तुमने तो छोड़ने का प्रॉमिस किया है, तो कम कर रहा है एडिक्शन, ऐसा तो सबको बताना चाहिए, है ना, डरना नहीं चाहिए। कोई भी एडिक्ट को ना बल्क में नहीं खरीदना चाहिए, क्या होगा, 12 सिगरेट लग गया, अगर जेब में पड़ी है तो बार बार ले लेगा, है ना। तो हमेशा अगर उसको बहुत क्रेविंग हो रही है, तो एक एक सिगरेट ही ले, ऐसा या एक एक पाउच ही ले। एक्सेसरीज कभी घर में नहीं रखना चाहिए, वरना माचिस को देख के, लाइटर को देख के स्मोक करने का मन करता है। दिस आर ट्रिगर पॉइंट्स। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे साइकोलॉजिस्ट आपका है, आपने इतना समझाया ना, तो पेशेंट तो एकदम खड़ा हो जाएगा, सर कल से बंद, कल से तो कैसे भी करके बंद। याद रखना 90% पेशेंट रिलैक्स होगा, 99%। जो ऐसा बोलता है सर कल से बंद, वो 2-3 दिन बंद रखेगा, चौथे दिन फिर से लेगा। तो आपको है ना, ये ऐसे साइकोलॉजी की थियरी है, स्टेप डाउन। कोई 10 सिगरेट पीता है ना, तो उसको बोलेगा कि डेट फिक्स कर लो, यानी एकदम ऐसा ही नहीं कि 10 दिन बाद का,
आप 3 महीने 4 महीने का डेट फिक्स करो, आपका बर्थडे हो, आपकी डॉटर का बर्थडे हो, कोई गॉड का बर्थडे जिसका आप मानते हो, बर्थडे को फिक्स करो और हर वीक एक एक सिगरेट कम करते जाओ, है ना, हर वीक एक एक सिगरेट कम करते जाओ। और जब आपने बिल्कुल कम कर दी है, 2 या 3 ले रहे हैं, तो भी आपको बहुत ही अर्जिंग और क्रेविंग हो रही है, तो निकोरेट च्युइंगम आता है, आप ऐसे साइकोलॉजिस्ट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, निकोरेट निकोटेक्स च्युइंगम आता है, तो वो उसके एडिक्शन को कम कर देगा। और ये क्या होगा, जो गुटखा या सिगरेट पी रहा है उसमें 700 हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिलेंगे, प्योर निकोटीन मिलेगा, समझ गए ना, तो च्युइंगम उसको दो। नेक्स्ट स्टेप डाउन मेथड, ये अवॉइड ट्रिगर्स। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा डोपामिन है ना, सबसे ज्यादा डोपामिन प्रेयर एंड मेडिटेशन से रिलीज होता है। ये एम्स की बहुत बार स्टडी हो चुकी है, एम्स की हो चुकी है, बहुत सारे निमेट्स की भी स्टडी हो चुकी है। जब पेशेंट आप उसको डिस्ट्रैक्ट करने जाए, उसकी हैबिट छुड़ाएगा, तो उसको कोई ना कोई फॉर्म ऑफ योग, प्रेयर, मेडिटेशन से जुड़े, तो उसका माइंड इतना रेस्ट पीसफुल हो जाएगा, विड्रोवल सिम्टम्स कम हो जाएंगे, उसकी फिजियोलॉजी नॉर्मल हो जाएगी। हाईएस्ट लेवल ऑफ डोपामिन इज रिलीज्ड बाय प्रेयर, मेडिटेशन एंड योग। ये बता दिया मैंने आपको। ओके, जब ये लास्ट स्लाइड है, बेनिफिट्स क्या है कि कोई आदमी जब हैबिट छोड़ता है ना, तो आपको उसको बताना कि आपको किसी से छुप के स्मोक नहीं करना पड़ेगा, अपने फैमिली मेंबर से, अपने पड़ोसी से, है ना, यू विल फील बेटर अबाउट योरसेल्फ। और क्या होगा जब आप छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये जो एडिक्शन के जितने साइड इफेक्ट्स लंग्स पे हैं, हार्ट पे हैं, वीकनेस है, लेथार्जी है, कार्बन मोनोऑक्साइड का आपकी बॉडी में लेवल बढ़ गया है, कमजोरी है, वो सब चली जाएगी, यू विल फील मोर हेल्थियर। एंड सेकंड थिंग, आपकी बॉडी में सीरोटोनिन रिलीज होगा, क्योंकि आप किसी को सेकंड हैंड स्मोक नहीं दे रहे हैं, आपको एक अच्छा काम कर रहा है, दूसरों को बीमार नहीं कर रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट, ये WTO का, WHO का वेबसाइट पे आपको सब मिल जाएगा, 100 रीजंस टू क्विट, बेनिफिट ऑफ क्विटिंग, टूल किट, मटेरियल। नेक्स्ट, ओके, सो यू आर देयर टू हेल्प। अगर पेशेंट हाथ उठाना है तो यू कैन हेल्प देम। थैंक यू सो मच। एंड I will ask one question to the students. Who is more powerful according to you? Slide diagram में भूल गया। Who is more powerful, teacher or mother? Who is more powerful? How many of you are telling mother? Oh, almost all of you are telling mother, right? But I believe teacher is more powerful. Why? Why? Because mother है ना, आप देखना, एक बच्चा रोता हो ना, उसको सुला नहीं सकती, और टीचर बोलिंग लेक्चर दे तो पूरा ऑडिटोरियम सो सकता है। थैंक यू। Thank you so much. अरे नहीं, तो लखविंदर सर का लेक्चर हो जाने दो, बाद में हाँ। ले करता, वरना सर को ऐसा लगेगा। नेक्स्ट, इसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री है, आप सब घर ले जा सकते हैं, वो साइंटिफिक वे से डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एडिक्शन को कैसे छोड़ सकते हैं। 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, मैंने रेखा मैम को दे दी है, पास रहेगा, आपको चाहिए तो यू कैन टेक पीपीटी एंड डॉक्यूमेंट्री बोथ। तो डॉक्यूमेंट्री सर के लेक्चर के बाद देखना चाहे, अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं हो रहा हो, तो आप देख सकते हैं, 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। थैंक यू सो मच। I think we need a bigger, louder. Thank you so much. Because sometimes not words but your actions speak. In terms of when sir was speaking, his actions, the energy was speaking itself, that how, you know, with his whole heart he was explaining about this concept, and then your uploads are definitely telling that how much you have enjoyed and obviously learned from sir's session. So now our third speaker is our own my colleague Dr. Lakshminder Singh, and obviously faculty of IBAS, who is an assistant professor with MIT Institute of Behavioral and Allied Sciences, MIT University Maharashtra. Sir has done his PhD from Punjab University Chandigarh, PG diploma in professional counseling and psychotherapies from Punjab University Chandigarh. Sir has also done a certificate course on de-addiction counseling and rehabilitation organized by National Institute of Social Defense, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, New Delhi. Dr. Lakshminder has worked as a counselor in drug de-addiction and rehabilitation centers in health department in the government of Punjab, where he has actively involved with Nehru Yuva Kendra for community awareness program. Sir has also worked in Chandigarh Administration Social Welfare Department and Child and Women Support Unit in Chandigarh as a counselor. Sir is also currently doing research and conducting many workshops in the area of drug addiction, rehabilitation and its prevention,
Now I request sir to come on the dais and share his expertise on this topic. Because today sir is presenting himself as a psychologist, because till now you have heard one psychiatrist and one MD radiologist. And then now another dimension which is getting added over here is by Dr. Lakwinder, who is a psychologist. So please welcome sir with a round of applause. Thank you. Thank you. I will take only 10 minutes. Talk about 3 things. So, not 10, I will take 15 minutes. The invitation I just received. Okay. So I don't want to come in between you and your lunch, and I also can't allow anyone to come in between my lunch also. So anyways, we are coming back. Why we need to open a dialogue on a very important social cause, that is addiction. So why particularly with the youngsters like you are sitting in this hall? So the 3 things, as already we have get the sensitization related to the drugs, types of drugs, reason why people get into drugs, and how we can get rid of it. And as Dr. Varun's presentation, what type of consequences can be the possible the outcome if someone is taking or addicted to nicotine, or like in tobacco products, like in smoking and chewable, whatever it can be. So my concern will be on specifically to look into the magnitude of the problem in Indian context. If the problem is big, then how the governments across the globe are tackling the problem. That will be the second concern, and how it can be curbed by the governments. And the third will be the preventive measures, which is one of the most important thing in related to the drug issue world over. The reason being, if we are spending 1 rupee on the prevention programs, and it will be equivalent to the spending 10 rupees on drug treatment programs. So how much we can save if we are emphasizing more on the prevention part of drug addiction related problem, and if we will do it very effectively with the proper participation from the youngsters like you, and obviously the topic talked a few days related to the fostering this belonging and the sense of belongingness, and how we can help others to rescue from the drug addiction problem. So coming to my slide, so I was skipping some of the slides. The reason being they have already covered by the we have some you can say scientific data with us, as the recent government, the Modi government, has done the second you can say survey, nationwide survey related to the drug problem, and the report they have made public in 2018, and it is quoted 2019 over here, and publicly and officially it is released in 2019, but the availability of report was there in 2018. So, as per the report, alcohol use in India is the one of the most, you can say, used substance in India. And if we will look into the statistics, there are 60 crore users, and out of those only 5.7 crore problem users and 2.9 crore dependents. So I will talk about the 3 terms which we are using. The one is use, second is abuse, and third is dependence. So in India, not only in India, but everywhere in the world, so no government has the policy related to use. And, there are some certain drugs which are legally people can purchase and consume. So whenever they are using that, they don't have any problem. When they become addicted, then government of India and also the countries have the one strict policy. They have a zero tolerance to the substance. If someone will get dependent, so we cannot afford to let him do the drugs, and if they will try to do, then they will not be able to get out of it. So if someone is taking drugs, they are not only the one particular victim of this particular thing, but the entire family is suffering. And if the problem is very vast in the community, obviously the problem will be spread over to the community, like we have witnessed the same in Punjab, as you might have already heard about. And the similar thing was happened in the northeast, particularly in Manipur.
in back in 1990s when the similar type of the problem was witnessed in the Manipur side. That was the northeastern part of the country. So if we are coming back to the again, so which is the most and very you can say favorite drug by the people youngsters, that is the cannabis. So if you look into that is the second the largest drug used by the youngsters, that is 3.1 crore users are there. Out of them, what 72% lakh people are problematic users. Out of them, 25 lakh people are dependent who need treatment for the drug. So if you're looking, why we need to look into this particular statistics, that is the one is the most important part. We need to look at the population who's more vulnerable related to drugs. So in between 10 to 75 years people, the 2.8% population is there. So males are more vulnerable to this substance as compared to females, but we cannot overcome if the females are not vulnerable at all. So till date, there are only two nationwide survey has been conducted by the Indian government after the NDPS Act. They have formed related to the control of drugs in India back in 1985. So the first ever survey was conducted in back in 2004. The second survey Modi government has conducted in the commission in 2016, and they have made the report public in 2018. So on the basis of this report, the first very important thing they have included. Now we have on the basis of this female drug dependents and drug users. So once specifically we are looking forward to go for the prevention measures, then obviously first of all we need to look who is the more vulnerable particular population and which particular area and state is more vulnerable and how we can proceed further for the preventive programs. So until unless we will not be aware about the magnitude of the problem, we will not be in a right situation to prepare the preventive measures and execute in the community. So these are some states who are more, you can say, suffering with the cannabinoids. The first one is Uttar Pradesh, then Punjab, Odisha, and Maharashtra is also in the list. So the third the third category of drug is opioids, and 2.3 crore users are there in India as per the survey report, and out of them 77 lakh people who are problematical users, and 28 lakh are dependent out of them. Again, once we are looking into the population, again the males are the more vulnerable gender for this particular problem, and then after the females and also the children in between 10 to 17 years old age are also again a very vulnerable population. So if you're looking for children in particular, those who are in between 10 to 17 years of age, then this number is very big. The reason being the population in India is very huge. If we will look into the highly population in the world, that is China is the first and we are the second one. If you will look into the mean age, then the China's mean age is somewhere around 37 and India's mean is somewhere around 27. So there's a huge gap between the mean age of China and India. So recently the Indian government has implemented a new education policy. So we want to manage our human capital. So the first thing is the education. The second thing is the health and their psychological and physical well-being. So if we can manage our youngsters and we can channelize their energy and potential in the right direction through the proper guidance and education, then obviously this drug-related issues can be minimized in indirect manner. So if you're going a little forward, there are some certain other drugs. Inhalants, which are more problematical, the more vulnerable population is the children, and they are not that popular among the adults like India as well. So I'm skipping through the slides. I'm coming to the treatment part. So we have seen how many people in India are struggling with the drug-related issues in India. Out of those who need treatment for the drug, only 27 are receiving. Over here, the role of the preventive measures and awareness is very important. So first of all,
people who need treatment, we need to integrate them with the right treatment facilities that can be government and the private sector. And secondly, we need to prepare and figure it out in which particular area the problem is huge, and we can spend more on the prevention and awareness program so people can be, you can say, prevented to get into drugs. So this was the little core dependence. The another dependence is also there, apart from the other, like it could be cannabinoids, opiates, all other drugs. Only 25% people are getting the treatment facilities. So 75% people who want to get out of drugs, but still they are not getting any treatment. That is the very serious concern for the social scientists and government. So if you will compare the problem of India at global scenario, then obviously the cannabis use is way you can say higher as compared to India. That is 33.9% at global level, and in India 1.2. And if you talk about the opioids, so there's a 0.70 level in the world level, and in India that is a huge problem, which is again a very serious concern. So I will let you know why it is serious related to the cocaine use and the opioid and EPS. We are going little forward. So there are three things which we need to be very particular about: the recreational use, drug misuse, and abuse. So recreational people might be looking forward to feel good, and they might be looking forward to hello, this one. Can you get the forward slide? So recreational, once we're talking about the recreational use, so people start with the recreational use. They want to get high on drugs, and their motive is not more about on the instrumental use. And if we are looking into the population who are working, definitely they might look for the instrumental use as compared to the youngsters, those who are looking forward to the recreational use. They want to hang out with their friends, and they want to go for the party and all. So if we will look into this particular diagram, over here, the very important thing we need to understand about drugs. There are some certain drugs, as per I mentioned, any government in the world do not have any specific policy for related to use. Though we have some, you can say, legal intervention in it, at what particular age a person can buy and use drug, then still the law is there, but still it is not that applicable in the community. So once we are talking about the drugs, there are two types of drugs we can categorize on the basis of their legal status. One is the legal drugs and another is the illegal drug. So if someone is taking cannabinoids, then it is considered to be illegal drug. If someone is get hooked to it, it is not only related to the health issues, but also the person will be in conflict with the law as well. If the person will be arrested and the person may sent to the imprisonment just because of they might be possessing that particular drug, and we might have already heard so many such cases in the Bollywood industry in recent past. So another is if you talk about the legal drugs, that can be alcohol and the tobacco products, which have the status of the legal drugs. And both the legal and illegal drugs can be consumed on the basis of instrumental use, as I already mentioned. So for students, instrumental use can be they are taking drug to stay alert. Like people might be using tobacco products, and they might be using coffee to stay low, not more drugs that maybe later on when it becomes addictive, and it can become more problematic later on. So now we are coming to how the governments are curbing the issue. So any government in the world is trying to curb the issue on the basis of these three parameters. One is the supply reduction, second is demand reduction, third is harm reduction. The supply reduction can be taken care by the law and you can say law and you can policing. So they are trying to control the supply of the drug, and demand reduction can be taken care of the treatment center, like psychologists, social scientists, and hospitals, and through awareness programs, and we are trying to reduce the demand of the drug. The third is there are some particular segment in the society, those who do not want to get drugs, but still
we as a society want to reduce the harm, not particularly for the client or for the person who is into drugs, but also to their immediate family member and the society as well. If someone is taking drugs, then they might be susceptible to catch HIV infection and hepatitis C if they are injective drug users. If they will be in close relationship, physical relationship with their family and any other member in the community, then obviously that harm will be very high. So for that thing, there are so many programs under HIV control in India are running where the harm reduction programs are functioning very well. And apart from that, there is one another program related to opioid substitution therapy, which is specifically related to people who are addicted to opioid drugs are running to reduce the harm. So if we talk about national drug, you can say control activities in India, NDPC Act has been created that in 1985. Then the creation of Narcotic Control Bureau in 1986, and you have recently saw the news related to this Shah Rukh Khan's son, and also the formation of expert committee, consultative committee was there, cabinet commission was commissioned. And if you talk about specifically the demand reduction, over here the most important role to play by the Ministry of Welfare and Ministry of Health and Family and other stakeholders are the University Grant Commission. Under the University Commission, all the universities are meant to facilitate in the demand reduction through the awareness and preventive program which we are doing in MET today. So state health departments are the another, and Ministry of Human Resource Development and NGOs are the another important stakeholders to reduce the demand in the community. So here there are some certain departments in the government and the ministries related to who are controlling the drug in India related to the supply and the demand, and it is specifically and clearly mentioned over here. I will not go more in detail. So now coming to the most important part, that is the prevention. So all the prevention programs which we are talking about that will be can be conducted on the three levels: primary prevention, secondary prevention, and third is tertiary prevention. Once we are talking about the primary prevention, so we are not allowing our youngsters to get into drugs. Say no to drugs is the most important concern in the primary prevention. Through awareness and prevention programs, we can sensitize our youngsters not get into drugs and develop another very important coping mechanisms and support system, and which can help them to refrain away from the drugs. So another is the second important part in the prevention is the secondary prevention. I know about Chandigarh as Chandigarh is very strict in terms of law and order. And specifically, if you will, police will arrest you by drink and drive. And if you have done something and you met an accident, and they will arrest you and they will keep you in the custody for a day. And they will show you very horrible pictures of accidents. And if you will spend the entire day watching those horrible videos, then you will be feeling very, you can say, upset. And you will not try to drive again in Chandigarh with drink and drive. So similar type of the preventive measures can be taken. The person is already taking a drug, and through these legal interventions, and but that may be not that complicated in terms of the law, but still it can be very helpful to motivate people to not use drugs in some certain areas. As in, alcohol is legal drug and tobacco products are legal. Obviously, through this secondary prevention, there's the provision in the law. So no one can smoke cigarettes and take tobacco products in the public because there's a passive smoking concept is also there. And similarly, drink and drive and other type of things are coming under the secondary prevention. The last slide I'm going to present, and I will take. So the most important, people who already get addicted and dependent on drugs, unless we will not help them, then definitely they will spread the problem further in the society. Because if someone is get dependent,
they need to be, you can say, linked with the appropriate treatment facility for the right good time. If we are providing that facility on timely basis, then definitely the possibility of rescue the person from the addiction very easy. If the person has already been into drugs for a long, then definitely the problem may be very worse. They are going to become worse day by day. So in that context, the treatment is very important, and the role of social scientists and psychologists is very important to link such people to the treatment facility so they can help us to get out of drugs. So that was all related to this. It's already 1 o'clock, so I'm winding up over here. So thank you everyone. So being a very patient audience. Before I will step down from the stage, whenever we are working with the people, those who are into addiction and drugs, then definitely hand holding is very important concern. If people have a meaningful relationships, they can get out of the problem. But there is another condition is also there. Until unless you are not going to take the charge of your own life, no one else can help you. Meaningful relations are very important to rescue, but also you need to at the same time to take the charge of your own life. So on this note, I am going to wind up my session. Thank you. Thank you very much. I think when Lakhminder sir is speaking, you should say that with your actions. How will show? Louder. Yes, it's advanced. Very good. So, Lakhminder sir, thank you so much. You have added another dimension and perspective to what we were doing. Like, you know, the first speaker presented another dimension in terms of psychiatry and the name of the drugs and different thing in a more deeper way. Then Dr. Varun has included 3 dimensions. They're mostly focused on tobacco, smokeless, and both smoking. And then he presented other dimension of spirituality in between, filled up some stories and some images. And you added another dimension as a psychologist, that how, as a psychologist, what is our role and how we can do that. In very such a short time, he presented such a good presentation and delivered the thing. But I should tell you one thing here, personal. So when Dr. Lakhminder joined IVAS, we came to know that sir is from this field and he has already worked in government hospital. And you should know that the person who's working in the government hospital, even Dr. Varun, I even heard stories from him before sir came here. So what I found, you know, that when Lakhminder sir was sharing stories of different people, how he has worked with different people, with different communities, different age groups, it was really, really motivating, and I was able to visualize the thing. I never been exposed in such a level, the way through stories I got connected with the world which sir wanted me to connect. So I think the next session we are going to keep based on the stories itself. So we would like to have some stories from you, sir, the real life stories, not real life stories, that will definitely connect us with how, what is the world like, and how, if we are going to work as a counselor, how we can do that. So thank you so much, Lakhminder sir. Now we can take a few questions if you want. Dr. Varun and Dr. Lakhminder is here. So I want, if you can have some questions, I want sir and both the speakers to answer the questions. Anybody? I can't see anyone. Yeah. So our students are, sir, our students are from MSc. And they are doing a clinical, industrial, and counseling psychology specialization here. So they are master student. So please, if you have any questions, go ahead. Okay. So they have become expert today. Yes. That's so nice to hear, and think that your all queries are already answered through such detailed speeches. Okay. Now I request Dr. Poonam ma'am to deliver a thank you note. Hello everyone. So thank you for inviting me to giving vote of thanks.
because this is another area which is close to my heart where I have worked. So HIV and drug addiction go side by side. And apart from that, in our classes also I have taken substance abuse and drug addiction lectures, and the things which are explained by today are expert from outside also and in-house expert also. I was quite correlating with what we have studied. And I would like to mention here that with all the expertise, the one very new thing which I have observed in my art students from the last 5 years, I think I have been taking lectures on this. So many of, very unique thing which they have come up, because when I take this lecture, I ask them that why do you think people take drugs or substance? Have you ever tried it? And if yes, have you continued? Or if no, why you haven't? So the very interesting thing I got in one of the class was that they feel stigmatized if they don't use it. So, that is how youth is defining stigma. Earlier, we used to think that people who are taking drugs are stigmatized, but that's a reverse for them. They feel stigmatized for not taking because they want to belong to that field. So, I would like to thank all of our guest speakers and Dr. Devendra from PGIMR Chandigarh for letting us know very beautifully that how we can identify various signs and symptoms of people, who have been to drugs or substance. So the classification wise, how he has very finely moved ahead. That was really good, because that was a very technical thing for I think all of us, that how you can notice pupils and how there are other body signs. So, Dr. Devendra, we are very grateful to you for taking out time for our students, because I know that how far footing it is PGI and how much patient load you have. So, thank you very much. Now, I would like to give my sincere thanks to Dr. Rohan and Dr. Varun, sorry. So, Dr. Varun, your presentation was really, really very nice, and definitely you, by using your 50-10 formula, I think they have worked up, and by adding your real life examples and showing that the reality of tobacco use, you have really enlightened not only them to us also, and also you have added the dimension of that how society must contribute to it by planting trees, because smoking can be, environment can be more harmful than smoking. So we must now, this is the time that we must look toward more of changing our environment than just single getting focus on the individuals, tobacco smoking. Thank you, sir, for coming here, and we look forward for your more sessions on the same topic. Now, I would like to thank you, Dr. Lakhvinder, because we have always been, as Dr. Rekha has said, that we have always listened stories from his end, that how he has worked with Chandigarh government, and both of us belong to same place. And I knew him only when he came here. We have never met in Chandigarh, but the areas went together when he started explaining his stories. And today I had glimpse of the work he has done. It was really nice to know that how government is going ahead with that, and the prevention activities which are carried out at government level and primary, secondary, tertiary level preventions are very well explained by him. Thank you, sir. So I would like that one more day you spend to share your stories, so that success stories you can write, and how things work for in the field of addiction can be another addition to that. So with this, I would like to thank our director, sir, for always being so facilitative and welcoming about organizing lectures and workshops on these important topics. Thank you, sir, and we look forward for your support every time which you are giving, and
many more such workshops. And then I would like to thank the IT people, head office also, and here also. And the most important, our Vice Chancellor sir and Ashok K. Chauhan sir. On his birthday, we are celebrating this Community Belongingness Day. So, Dr. Ashok Chauhan and Atul Chauhan sir have always been the guiding force for us, and we would like that on this sense of belongingness day, we will go into community and target them also through our substance abuse program, so that we can not only lighten our IBA student, but also the community within, near vicinity. Thank you. Thank you everyone and the students for their beautiful Nukkad Natak, because it was apt, it was very focused, no glamorization of drugs and substance was done. It was sticking to the message which they wanted to give. Also the dance performance, which made the ambience for today's session. Thank you everyone.